ट्रैवल शॉट्स पहले हैं, फिर लोकेटर है, फिर पॉइंट्स टेबल को याद रखिएगा प्लीज। आपने ब्यूटी पे करना होगा। पहले ड्रोन शॉट्स अराइवल से बता दें प्लीज उसको। KP are on the crest of a wave. They have won every battle of the brave. Be it first or chasing a target, neither does the toss result deters their focus. Central Punjab have suffered contrasting fortunes. No formation has worked for them. A side packed with stars is yet to find Mary beyond their solitary win. A sleeping giant they may be, but another slip would inch them closer to elimination. A daunting task holds up the hill. Hello and welcome and good morning from the Multan Cricket Stadium. It's Central Punjab versus Khyber Pakhtunkhwa in the first encounter of the day. Okay, teams know exactly the work is cut out. What Central Punjab needs to do, they need to win a game, no matter how. And they're up against the side that hasn't lost a game yet. That's KP. So it's going to be a task. But when you need to win, you don't need to look at the opposition. You just need to get on with your game and your strength. And that's what Central Punjab needs to do today. But before we actually get into the match today, which is between KP and Central Punjab, let's have a look at what's happening in the tournament. That's the Kingdom Valley National T20. The points table do suggest, as I just said, endorsing the fact that Khyber Pakhtunkhwa is right on top, 5 out of 5, and Central Punjab is 6 games down. And they've lost 5 of them. They've only won 1 match. So it's the encounter between the top of the table and the bottom of the table. Let's touch base with what happened last night, the games that took place yesterday, and a quick one with Marina Iqbal. Good morning to you, Marina. Good morning to you as well. I want to look at yesterday's game. Let's talk about Balochistan's performance. They're gaining and strength to strength. They're performing well. And if you honestly really ask me, when you look at a particular side on paper, you say, is it star-studded, or is it someone you expect to score, like Shan Masood or Asad Shafiq or even Hasibullah was performing. And you look at KP, you don't see any big names, but they're getting the results going. The momentum that Balochistan is gaining, they are surely to give a very good fight if they are to make it to the semi-finals, which they should. Well, definitely. You look at them and you know that they're all sorted. Their bowling has been coming together. Yes, there were some issues early on with their death bowling, but I think they've covered it nicely. Overall batting, yes, you've got Shan Masood, who's a superb person to have in your middle orders. You've got Asad Shafiq up at the top, who's a technical batter, and Hasibullah on the other end, who loves to display himself. So they all are performing, and I think overall they know that what their weakness is, but they mainly focus on their strengths, and that's why they're winning. You can actually look at that. I mean, I was just waiting for it, that we see that how Balochistan have actually had those winning moments and have been so happy about their performances. And overall, they've come up to the fight. When you look at a score like 169, they get to the 173 easily. They've chased targets which are in excess of 180 as well. And the reason for that, what we've seen is not just their batting, it's also their bowling that's actually come about. Yasir Shah was a touch expensive at the start of the tournament, but now he's showing what he's made of. And when your captain is performing, the other bowlers take a leaf out of it. Well, definitely. I mean, I love how Yasir Shah leads his troops. He's always involved in the game. He's always athletic whenever he's out in the middle. And he's always having a chat with the bowlers, trying to understand what the situation is, how to set up the batter. And I think overall it gives a very comforting message to the players that, okay, the captain is leading, he's involved, he knows what to do. I never looked at him or he appeared as a clueless person to me. And that's one attribute to him that makes him go extra mile.
It's not just the big names, but also some youngsters. And I was talking to the player of the match yesterday, and I asked him that how does it feel having Asad Shafiq and Shan Masood next to you? I mean, it always rubs onto you when you are having a partner at the non-striker end who's got so much, of course, experience. And Hasibullah has really come to the party. He's performed so well. His knock yesterday also was of conviction, of authority. And he doesn't look, worried about the totals he's chasing. He's basically very much into his own, and he knows what his job is, especially in the power play. Well, the best thing for me is that he doesn't take anything for granted. He played superbly the other day, the previous game. It was chase, yes, and it's a huge cushion to have someone like Asad Shafiq with you as an opening partnership. You can always have a chat if you're having struggles facing any bowler. That's one plus. But I think the way he carried out, the way he knitted that innings was superb. He took his time, he then started attacking, and he made sure that he would go and finish the game. Unfortunately, he couldn't, but he travelled to 16th over, and that's why you can understand that he's becoming mature and he wants to take responsibility as well. And whenever he comes out, he expresses himself. Okay. Now let's shift our focus to the match today, which is KP versus Central Punjab. KP, as we know, again a pretty nicely spread out buffet. You get every taste. These are not big names, but some of them have been in the circuit for a long while. Kamran Ghulam is one of them, who's an integral part of the side. He bats at number 3, and he makes sure that the side gets that stability in the top order or top 4. Then you have other players who are, I wouldn't dare call them bits and pieces cricketers. They are proper T20 batters and bowlers, and they are holding hand in hand. You talk about Azmat, you talk about anyone. They come out, even if they contribute with a fast 20-25 each of them, you can run up to 200. Well, the best thing I like about KP, as you mentioned, they are not bigger names, but you can have a feel that each and every player comes with that attitude that what I can do for my team in a certain situation. And that has been a superb push for them. Whenever whoever comes out, even he's a bowler or even he's a batter, he knows that, okay, he has a certain role to play, and he'll always come up with how he can perform and make the team win. I think that's the driving force behind KP. They are very well gelled together. You can have a look at that. I mean, the batters are doing well, the bowlers have been performing, and it's a huge, obviously, advantage for them, for the young bowlers, to have someone like Imran Khan Senior around them, who knows the game, who has been performing in T20 format. And I think each and every one, again, has that certain drive that, okay, they have a reputation now and they are going to win every game. Okay. Now, we've moved to the extreme left of this ground, which is a big square out there. So we have a pitch which is on that side, extreme left to us from the commentary box. And Shah Faisal will tell us what the pitch looks like. We've had some great pitches here at the Kingdom Valley National T20 Cup. First in Rawalpindi and now in Multan. The weather is on a hot side. It's 32 degrees at the moment, and the humidity is 66%, and it surely will go up as the day progresses, expecting another hot and sultry day. Talking about the pitch, it looks exactly the same as we had yesterday. That straw-colored grass is there, cracks, but it's pretty firm on the surface. The only thing is, this surface was exposed to sun beating on it all day yesterday. So as the day progresses, it may get slower towards the back end of the day. But at the moment, it's full of runs, and I think bowlers will have another tough day here in the heat of Multan. All right, welcome back once again. That's the pitch, and this is what we know. We saw high-scoring games yesterday. We hope that the square is going to play the same way. What about the toss? What do the captains want if they win it? Let's join Ali Yunus. It's a must-win game for Central Punjab as the lock-horns with the table toppers Khyber Pakhtunkhwa. I've got the two captains alongside me. Qasim Akram for Central Punjab, Khalid Usman for KP. Iftikhar Ahmed is the match referee, and it seems like Qasim Akram will flip the coin. Tail. Tails is the call. Tails it is. Khalid Usman, क्या करेंगे और क्यों? हम बॉलिंग करेंगे. कल का मैच आपने देखा, कैसी कंडीशंस लग रही है, पिच कैसा लग रहा है आपको? पिच अच्छा लग रहा है और बैटिंग के लिए अच्छा है और चेज हो रहा है इधर, तो इसलिए हम बॉलिंग करेंगे पहले. आपकी टीम को ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आप चेज करें या डिफेंड करें, आसान हो जाती है कैप्टनसी जब ऐसी टीम आपके पास हो?
जी बिल्कुल ऐसा ही है और लड़के सारे माशाल्लाह अच्छा खेल रहे हैं तो मेरे लिए बहुत इजी है। टीम न्यूज़ आपकी क्या है? टीम में आमिर अजमत की जगह मास खान खेल रहा है। राइट, ऑल द बेस्ट खालिद उस्मान। थैंक यू। कासिम, बॉटम पे टेबल पे ज़्यादा हैप्पी प्लेस नहीं होती है टीम के लिए, लेकिन क्या मैसेज दिया आज आपने टीम को? जी बिल्कुल, ये अच्छी क्रिकेट खेलेंगे और कोशिश यही करेंगे पहले टॉप ऑर्डर्स हैं वो अच्छा खेलें और जिस तरह की विकेट है बैटिंग विकेट है, बैटिंग ट्रैक है, इंशाल्लाह अच्छा टारगेट सेट करेंगे। आपका अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं, अगर आप यहाँ से सारे मैचेस जीतते हैं तो आप क्वालिफाई कर सकते हैं, तो होप अभी बाकी है टीम के लिए। जी बिल्कुल, 4 मैच रह गए, इंशाल्लाह कोशिश करेंगे ये अच्छी क्रिकेट खेलें और जीतें। और आपकी टीम न्यूज़ क्या है? जी 2 चेंजेस हैं, अब्दुल्ला की जगह वकास मकसूद और मोहम्मद हुनैन आए हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट कासिम। थैंक यू। Right, the news from the center is that KP has won the toss and decided to bowl first. Okay, let's have a look at the two teams, and we just heard the captain. So one change for Khyber Pakhtunkhwa, and they've brought in Maas Khan back into the 11. And Central Punjab, now what they have done is they've left out Abdullah Shafiq and they strengthened their bowling. Hunain Shah and Waqas Maqsood are the 2 bowlers who've been added. So what they've done is just shifted the whole batting order up. So Akhlaq will now open with Fazan, hopefully. And then so on. Tayyib Tahir will be at 3. Shoaib comes at number 4, which is good. He was coming at number 5. So, you know, in all honesty, when you actually look at a T20 side, you expect that your top 4 perform. If your number 9 and 10 are batting, that means something's going wrong. Well, definitely. I mean, it's all about how they approach the batting, and obviously you need to capitalize the power play. And what Central Punjab was having, it wasn't just the power play, it was the whole batting spread it over 20 overs. I think this is a good thing. What they have done is they're focused on one area, one department to strengthen, and that's bowling. Yes, the batters will have more responsibility, but at least they have a clear mind now what their role will be. Also, in hindsight, somewhere losing the toss for Central Punjab might work for them, because had they won the toss, they probably would have chosen to chase. And when you're already not getting wins, you're adding that scoreboard pressure on you. Well, definitely, I think it's going to work for both sides. When they're batting first, they know they have to put up a certain target. But again, I like the approach. I think they were struggling a lot in the power play with Abdullah. He is a good batter, but he was struggling. And with Faizan and I think Mohammad Akhlaq, now they have a clear license to go. And the middle order sits very well with Irfan, Shoaib Malik, and probably, I think with Hunain Shah, he's come in, he's quick bowler, that's what I've heard. Waqas Maqsood, he's a very economical bowler. So again, when you're having troubles, it's best to focus on one thing and on basics. They were trying too hard to dominate and make their comeback. Okay. Here we are with head-to-head, 5 and 2. And it's clear that Khyber Pakhtunkhwa has the upper hand. If you were to make any one change, not in terms of players, but the style of cricket KP is doing, or any team doing so well, it's hard to find how can we get better. But anything that you notice that you'd like to see in KP? I think they're doing really well, but obviously every game is a different, every morning is a different. I mean, they have to come up and play the game and prove themselves again. But the best thing I like about them, they focus on basics and they're playing very simple cricket. They're not complicating things over out in the middle. Whenever the bowler's bowling, they know what areas to bowl at. I think, yes, probably middle order at times that has struggled for KP. They've gotten good starts, but at times they do fall back on their run rate. That's one area they can improve if you have to be over analytical. A quick one word, your prediction. I know toss is done, everything is in front of you. KP is winning everything. How do you see this game? Well, there's always a saying that what goes up has to come down. I think maybe Central would. They've hit rock bottom, there's nothing else to lose. They might come up, it's a good looking team, they might come up as a team together and push KP over. Well, I hope so. Watch out for Central Punjab. It is another bright sunny morning, the last morning game in the National T20, and then from tomorrow we start the day-night games. Have fun and enjoy the 2 matches lined up.
good morning and welcome to Multan Cricket Stadium for game number 19 of Kingdom Valley National T20 Cup. It's a match between Central Punjab and Khyber Pakhtunkhwa. It's rather a hot morning here in Multan. KP side winning the toss and opting to bowl first on a very good pitch. They would fancy chasing down any total we posted by Central Punjab. The pitches have been excellent since the time that we have come to Multan. It is a very friendly batting pitch. A bit of grass here or there, but it makes no difference to the pitch. And as the day progresses, it will get better and better to bat on. The two openers, there's a change up the order for Central Punjab as we see Faizan and Ikhlaq opening the inning. There is no Abdullah Shafiq. Just two changes for Central Punjab. Hunain Shah coming in, a very exciting prospect alongside Waqas Maqsood. One change for Khyber Pakhtunkhwa. Maaz Khan coming in place of Amir Azmat. I've been joined with Shah Faisal in the commentary box. Shah Faisal, a good toss to win for KP. Good morning, Ali, and good morning all. Yes, indeed, this wicket full of runs. I think it may remain the same for the entire 40 overs. For the first game at least, it's hot. If anything, it may just get slower. Ikhlaq, 30 games, 465 runs. Would like to get this average up at the moment, 19, a strike rate of 133. He's known as a basher. He's had quiet moment in this tournament so far. His partner Faizan has played one good knock, and he was the cause of his team winning that game as well. Just 7 games, 177 runs, both average and strike rate looking pretty decent. And that half century came in this tournament. Yeah, they're up against the senior pro. Imran Khan Senior will start off proceedings for Khyber Pakhtunkhwa. He's been around for a long time. 82 matches, 93 wickets. 3 times he's taken 4 wickets. Best of 4.4 for 20, and a good healthy economy also. We're still waiting for the umpires. There seems to be a problem there at Inzamamul Haq enclosure end. They're still waiting for that. And we're still to figure out what is the problem to start off things of a match that is a must-win game for Central Punjab. They cannot afford a lose here, because if they lose this game, they are out of the tournament. So they have to do whatever they have got in their pocket here to try to win this game. That's the main entrance. That's where the batter will be looking at if he's facing from the end we are commentating. And the point table tells the story of domination of Khyber Pakhtunkhwa yet again at the domestic scene. They're all conquering, and this season has started no differently. But Balochistan has really, against the odds, come up second in the table so far, being ahead of the likes of Sindh, Northern, Southern Punjab and Central Punjab, languishing at the bottom of the table with plenty to ponder. Yeah, it's disappointing to see such a huge side, Central Punjab, at the bottom of the table. They've just got one victory in this tournament, and courtesy to Mohammad Faizan. He played a very good inning to see their team home. A lot of questions to be answered by Central Punjab. They've made a couple of changes. They've strengthened their bowling lineup. They've brought in Waqas Maqsood and younger brother of Naseem Shah, Hunain Shah. He's really an exciting prospect. Really looking forward to see him bowl. Still, there is some trouble. Rashid Riaz, we all know that. He is such an excellent umpire alongside Imran Javed, standing in his 12th T20 match. Saqib Khan being the TV umpire. Match referee Iftikhar Ahmed into his 29th T20 match. Still hold up in play. Third umpire has been reached out and come back. Apparently there's an issue with the nomination of the KP side, and that is, I think, on the team sheet Amir Azmat is not playing, and there was a slight discrepancy on who was coming in for him. Maaz Khan eventually
was named in the 11. This gives us time to have a think about what KP is achieving in domestic cricket and what's the reasons behind it. Probably it's a long and a healthy debate, but the results are there for everyone to see. Yeah, we don't have enough time because everyone is in their place to start off these proceedings, but we will definitely talk about this KP size, their domination at this level. They've been brilliant over the years. It's just not 1 year or 2 years. They've been consistent. And consistent in all formats. If you talk about, they won the 4-day championship, they qualified for the finals, they lost to Balochistan of Pakistan Cup. This is the new season and they look very good, very dangerous. As we see that everyone is in place and all set to start off this 19th game of Kingdom Valley National T20 Cup. It's going to be Imran Khan Senior to start off the proceedings. He will be bowling to Fizan. As umpire says, let's play. Monitor run. Clark saying no, there is no run available, and you got to be very careful with this KP side. They're an excellent fielding side. They catch well. You're always in for a run out chance. There are no freebies. They don't give away extra runs, so you got to work extra hard playing against KP. You do. Central Punjab will be very nervous because their opening partnerships hasn't been good throughout this tournament. And they don't want an early wicket this morning as well. So very careful. New pair at the crease. They need a good start. Well, that's bowled, but there is protection. Central Punjab and Fizan are off the mark. That's the nervousness I was talking about. It was a nothing shot. Not enough pace on this pitch. Still, he was caught in between. Couldn't be on the front foot, neither on or on the back foot. That is the nerves I was talking about, and they have to get through this phase to get over those nerves. And power play is also important, but this pitch and generally T20, it's shown that you can have a look in for a couple of overs in the power play to give yourself a better chance to launch and get a good power play. A slip in place. It's good bowling. He would know where to bowl, how to bowl on a pitch like this. Even it's a batting friendly pitch, but with the experience of Imran Khan Senior, he's been around for a long time. He would know how to bowl on these different conditions. Imran Khan Senior just been a prolific performer for KP side. He's somebody that you always can go to the captain. He's a delight to have in the team. Always giving in 100%, always running in with the same energy. It's just brilliant to see somebody like him in the side. 35 years old. Have a look at those 93 wickets at this level, and economy also very good. Oh, it's in there. It should be taken. Should be taken. And is taken. So first blow for Central Punjab. The new pair, the new opening pair hasn't worked. It's a Clark, just wanted to go over the head of that mid-wicket fielder, but could only manage that top edge, and an easy catch for Khalid Usman. That's absolutely brainless cricket. Central Punjab have committed same mistakes over and over and over again. Clark is not a spring chicken anymore. He's very experienced. Once again, getting overawed by the situation, the pressure getting the better of him. Another reckless piece of batting from Clark. He's gone without troubling the scorers. Central Punjab, 1 for 1. I like the word you used, reckless. That is exactly what it was. Clark, I mean, there was no point. You just started off your inning,
just wanted to dominate. Somebody like Imran Khan Senior, there are very minimum chances that you will get away with it. Tayyib Tahir, the man in form for Central Punjab, 479 runs, 650s, 140 his strike rate. But he won't be facing because they crossed. Faizan will face Imran Khan Senior. Oh, that's first boundary. Help itself towards that fine leg boundary for a first boundary for Faizan and Central Punjab. Bit too straight on that occasion from Imran from wide of the crease, that angle. And Faizan wasn't pretty, but effective. He'll take the boundary. Just helped it on its way. Now we know that's the only way Faizan knows how to play. He will go after anything that is short. His intentions are clear. He needs runs. Good cricket. Looking for two. Was there two available? Definitely. This is a huge field. We've seen yesterday as well. The sloppy start there for Central Punjab. 6 for 1. Tayyib Tahir, the boy has been in tremendous touch in this tournament. Seems like that he's the only batter who scored runs for Central Punjab. He's just held one end together. It's been just brilliant. This is how Akhlaq went. Bit of a nothing shot. What was he thinking? You're just facing your second delivery of your inning. Want to dominate. Although it's a very good batting pitch, but still you got to apply yourself. You got to wait for the bad delivery. And against somebody like Imran Khan Senior, the chances are very less. Exactly, we were talking just before his dismissal that Central Punjab need to steady the ship a little bit. As we watch Arshad Iqbal, 21 years of age, 51 wickets already, average of 24 and an economy of 7.91. Exciting prospect. He's got a slip. Fine leg is up in the ring. Oh, that's beautiful. That is excellent start for Arshad Iqbal. Just moving away from Faizan. This kind of humid weather, you're likely to get the ball to swing, and it did swing fuller length. Slightly wider. Faizan once again. A lot to be desired about his technique, and at the moment his mindset is not clear. But this was a top delivery to start off. Yeah, this is what happens when you lose your partner early. Even somebody like Faizan, who's a stroke maker, that confuses him. But he holds back or he goes after the bowling. We know Faizan what he's made of. This time in dipper. Playing with the batter. Arshad Iqbal is a very experienced campaigner too. Very young, very strong, energetic. He knows how to bowl. Just checked his stroke at the very last minute. He was looking, setting himself up for that big wind-up. Faizan. That in-swinger really checked him. But talking about the problems at the top of the order, Faizan is one of the fastest 50s of the tournament. In fact, the fastest of the tournament. Outside the off stump, this will probably be called wide. Yeah, looking at those stats one more time, Faizan is probably a very good change for Central Punjab. 21 ball 50 against Sindh. Look at that number 2 batter, Mohammad Urera, playing the game yesterday against Northern. Played a wonderful inning against Sindh, 24 ball 50. Irfan Khan Niazi also a central batter in the side. Ali Imran is probably we're not gonna see him in this tournament again. Sohail Tanveer, a surprise package. Tayyib Tahir also in the list. Another wide. Harris couldn't get it. You see that list, Ali? It's 3 of the Central Punjab batters are amongst the quickest 50 makers in this tournament. But that would suggest as a team, they've
as a batting unit. In fact, they've really struggled. And their struggles have been at the top of the order. Like I was just saying, in the power play, their best score has been 57 for 3, but they have scores of 33, 38, 32, 28. So that's where their problems have been. Rashid Riaz standing in his 81st T20 match. Imran Javed, 12th T20 match for him. Very good umpire. Saqib Khan is the TV umpire. Good length, good hard length. Arshad Iqbal. We've got to talk about Central Punjab. They played a game yesterday, the second game, and now they're up against in the morning. How physically challenging it is for them, because these are form conditions, these are hot conditions, not easy. What do you think? It's a quick turnaround. If you look at the positive side, they won't have to think a lot because they must be under immense pressure. When the opportunity comes quickly to put the things right that you've been doing wrong, sometimes that works too. We'll have to see. Fetching outside the off stump. Tayyib Tahir, we know what he is capable of. He's also a bit of a dasher. Top 3, they play one way. But if you think about the 10 balls that we've seen so far, it's a very nervous start. Someone like Tayyib Tahir, who's very confident. Look at that. Nothing short. Look at those feet. Never moved. He just wafted at it. It means that there isn't any clarity in the camp. There's no clear instructions or role allocations to the players, especially in the power play. Now that the wicket has fallen early, I think everybody is under pressure. Yeah, you expect that to happen because it's a must-win game. If you lose this one, you're out of the tournament. And these young boys, well, to be very honest, I was expecting better of them. Having Shoaib Malik in the side, I thought that he will be the one who will just guide these youngsters and take them home. But it hasn't just worked for them. Too many changes, and that's Tayyib Tahir for you. Very consistent with good strike rate. That's the best part about him. 72 against KP the last time he played, of just 45 deliveries, and that 50 against Northern of 34. It's been very, very good for Central Punjab. Good length. This will end the second over. 11 for 1 Central Punjab. That's Central Punjab so far in this tournament. Just one win against Sindh. And it has been a hard work all through the tournament. Lost by 2 runs to start off the campaign against Balochistan. That was the game they should have won, but they lost. Then again, other than that, there are easy wins for the other teams. Imran Khan Senior. Again, that cow corner. They always search for that area. Earlier we saw Ikhlaq also trying the same sort of shot and losing his wicket. This time it's Fizan. Just really very, very uncertain start there. Don't have to get off to a flyer, but at least you need to feel the middle of the bat. It's been very uncertain. Play and a miss. Big swings across the line. I mean, there's no rhythm to this Central Punjab innings. This man can put it right though, because he's in good enough form. Yeah, one thing let's admire about Central Punjab is that they've got given opportunities to the youngsters. Earlier we saw Ahmed Shahzad included in the side, Abdullah Shafiq being dropped. So they've been persistent with the youngsters, somebody like Tayyib Tahir, somebody like Irfanullah Niazi, Faizan. They've given an opportunity, although they've got senior players like Umar Akmal playing for second 11. But they've been persistent with these youngsters.
So you've got to admire Abdul Razak and his guts to continue with his youngsters. Although they're not winning, but they're at least building the side. That's something that I admire about Abdul Razak and his coaching tactics. Point back will earn him 1 run. Ahmed Shahzad did play a few games early on, could not quite score runs at this level. In one inning it looked good, but could not quite convert that start into the big one. Abdul Razak, I'm sure he will be a worried man. Yeah, Ali, I beg to differ with your thought process, because I think Abdul Razak is really struggling. And with senior players in the side, he couldn't gel them into a squad. And when you talk about giving opportunities to the youngsters, they haven't come up with a product. There's not consistent enough. Edge. Harris couldn't get to it. Once again, beautifully bowled from Imran. A nothing shot from Faizan. He just angled the bat. He'll take the boundary. Unconvincing. No slip. No slip. You're just in the 3rd over of the game. A slip would have helped. Yeah, that's the disappointment for Imran Khan Senior. Was there a slip available? It would have gone straight into his hands. A lucky boundary for Faizan. Yeah, coming back to your point about Central Punjab, I know you don't like it, but still I would say that they are in that rebuilding process. They have given the opportunities to the youngsters. That is what a long-term thinking is for a coach. He might not win this one, but he will build a team. That is a brilliant shot. Faizan, has it gone all the way? That is something to be checked. Still waiting. It was middled nicely. I won't be surprised that it has gone all the way, but we'll have to wait for the umpire's decision. First time in the innings, Faizan has middled one. It was that in-between length. Did it go all the way? It did hit the skirting on the full, I think. You'll have to wait for the umpire's decision. This will give Faizan some confidence, like I said. Another angle. I think it landed on the skirting, so should be a maximum. Yeah, touch and go. Still not satisfied, the 3rd umpire. In a T20 game, this 1-2 runs difference is a very crucial one. So you got to make sure that you make the right decision, and I believe he has made the right decision. He's signaled it as a 6. So this will give a lot of confidence to Faizan. His first maximum of the inning. And with how you see things with Central Punjab, Ali, I think we should leave it at that. We agree to disagree. Again, he was searching for that cow corner. You could just tell the way he's, set up himself towards that area. 3 overs gone, 24 for 1, Central Punjab. Mohammad Ali played for a couple of games alongside Abdullah Shafiq. I thought he looked good yesterday, Abdullah Shafiq, but then played a very wrong shot. That is not something that you expect from somebody like Abdullah Shafiq.
Khalid Usman, 67 wickets for him. Best of 5 for 26. Very impressive. Just 1 over for Arshad Iqbal. You got a feel for this KB side. They've got a black kit. Absorbs more heat. But yeah, definitely it looks good on them. But still, they're a strong team. They're strong lads. They'll manage. 3 overs, 24 for 1, Central Punjab. First time we're seeing spin. And straight away down the track, there is an appeal. Not out, says umpire. Too far down the wicket. Khalid Usman just putting pressure on Faizan. There was no chance he was going to get that. That is huge. That is big. That is out of the park. Second maximum for Faizan. Oh, Faizan got underneath that one all right. Didn't come out of the crease. A big stride down and swing through the line. Khalid Usman getting too close to Faizan, and Faizan has deposited him. Come on, boys. Good tactics. Put pressure on the skipper. On the track again. Oh, there's a chance there could have been. I think Faizan has decided that he's not going to let Khalid Usman settle. He's using his feet. He's going to go after him. The intentions are clear. Pressure definitely on Khalid Usman. When Faizan scored that 50, the thing that was evident, the clarity he had that day. Oh, went straight. Lucky for Khalid Usman. That was hit hard. Talk about Faizan, when he scored that 50, it was against the likes of Sohail Khan and Mir Hamza, and he realized very quickly his only way to survive was to attack. And that freed his mind, and he went about his job very efficiently. Not quite finding the gap there, Tahir. He struggled yesterday. And overhead has not been at his best. 6 deliveries for his 2 runs. A single will end the 4th over. It's 32 for 1, Central Punjab. अरशद इकबाल का पहला ओवर विकेटलेस रहा और मोहम्मद अखलाक ने आज एक बार फिर बड़ी मायूस कुन बैटिंग की और शुरू में ही में पुल करने के लिए गए। एक बार फिर लेंथ का उन्होंने लिहाज नहीं किया, ना ही सुबह के सेशन का किया और कई दे बैठे खालिद उस्मान को। स्कोरर्स को उन्होंने फिर जहमत नहीं दी। इस टूर्नामेंट में अक्सर ऐसा हुआ है कि स्कोरर्स को जहमत दिए बगैर ही रहे हैं, इसलिए अब्दुल रज़ाक को मायूसी का सामना करना पड़ा। सेंट्रल पंजाब के खेमे की आप बॉडी लैंग्वेज का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं खुद अब्दुल रज़ाक को देखकर। शॉट सिलेक्शन पे बहुत बड़ा सवालिया निशान है और ये एक मसला रहा है सेंट्रल पंजाब के बल्लेबाजों के साथ। वो रन्स करना चाहते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा जल्दी अटैक कर रहे हैं और गलत लाइन और लेंथ को अटैक कर रहे हैं। लेग स्टंप को मिस कर जाती। इमरान जावेद ने बगौर देखा और उसके बाद फैसला फैजान के हक में दिया। वाज़ेह तौर पर गेंद जो है सीम होने के बाद लेग स्टंप को छोड़ती हुई जा रही थी। अच्छा फैसला दिया फील्ड अंपायर ने। आप समझती हैं कि सिर्फ शॉट सिलेक्शन का मसला है सेंट्रल पंजाब को या इसके अलावा भी मसाइल हैं? मसाइल ये हैं कि उनकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही और जब आप
एज अ बल्लेबाज आपके बल्ले से रन्स ना आ रहे हो तो आप ज़बरदस्ती करने जाते हैं। जब आप ज़बरदस्ती करते हैं तो हर गेंद को मारने की ताक में आप अपनी विकेट गंवा देते हैं। या फंड करके एक रन हासिल किया। अरशद इकबाल जान गए कि फैजान को अब अपने पंजों पर रखना है, इसी नई गेंद पर ही उन्होंने शॉट गेंदें करना शुरू कर दी है। और अखलाक के लिए शायद बेहतर होगा कि ये विकेट कीपिंग को तर्क करके अपनी बैटिंग के मुतालिक बैटिंग पे ही ज़्यादा तवज्जो दें, क्योंकि जब ये 2 बरस पहले खेले थे शुरू में बैट्समैन की हैसियत से ही लाहौर के लिए, तो बहुत अच्छा खेलते हुए नज़र आए थे। पिंडी की पिच पर सेंट्रल पंजाब के टॉप स्कोरर थे, वहाँ आसान नहीं था उस सीज़न में रन्स बनाना। बाद में इन्होंने विकेट कीपिंग की इजाफी जिम्मेदारी अपने शानों पर ले ली और शायद जो बैटिंग पर इनकी तवज्जो थी वो हट गई थी बैटिंग से। T20 फॉर्मेट जो है वो यूटिलिटी प्लेयर्स का फॉर्मेट है, और जिस तरह का चल रहा है सेंट्रल पंजाब का, यहाँ पे बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं। तो मेरा ख्याल है खास विकेट कीपिंग में इनके पास ऑप्शन भी मौजूद नहीं। जब हम बात करते हैं यूटिलिटी प्लेयर्स की, हमने देखा है कि कीपर्स जो हैं वो बहुत अच्छे बल्लेबाज भी होते हैं, ये प्लेयर के अपने ऊपर भी आ जाती है बात। सेंट्रल पंजाब की टीम का ज़्यादा अच्छा रिकॉर्ड रहा नहीं। 2021 में इन्होंने फाइनल ज़रूर खेला था, 7 मैचेस इन्होंने जीते थे, लेकिन 2019 में 2020 में मुसलसल नाकामी का सामना करना पड़ा। हिट लगाने के लिए गए, खासी जोरदार अपील थी, लेकिन विकेट कीपर ने इतना साथ दिया नहीं अरशद इकबाल का इस बार। खास तौर पे लगा नहीं कि कोई एज है। फिर लूज शॉट खेली है, बिल्कुल भी गेंद के पास नहीं थे, नजर नहीं थी गेंद पे, हालांकि ये बाउंड्री ऑप्शन हो सकती थी। तो मोहम्मद इखलाक की बात करें, मेरा ख्याल है विकेट कीपिंग में सेंट्रल पंजाब के पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। जुनैद थे, उनको उन्होंने वापस भेज दिया, तो जो रिसोर्सेज हैं उन्हीं को इन्होंने अब यूटिलाइज करना है। बहुत देर हो चुकी है कि आप कोई नेमल बदल करें उसका। यह किया भी जा सकता था, इस पर गौर। बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो जिस तरह की फॉर्म दिखा रहे हैं ग्रेड 2 क्रिकेट में, गोगे वो बलूचिस्तान के लिए सेकंड 11 के मैचेस खेल रहे हैं, उनको आजमाया जा सकता था यहाँ लाकर, क्योंकि विकेट कीपिंग और ओपनिंग ये दोनों का मसला हल हो सकता था। वो T20 के स्पेशलिस्ट हैं। जुनैद अली को खिलाया गया था, लेकिन वो बैट्समैन से ज़्यादा विकेट कीपर हैं। दरअसल वो विकेट कीपर बैट्समैन हैं, इनको शायद बैट्समैन विकेट कीपर दरकार था, क्योंकि अक्सर आजकल T20 की ही ज़रूरत बनता जा रहा है। बैट्समैनों को ग्लव्स पहना दिए जाते हैं। लाजवाब ओवर इस बार मुसलसल परेशान किया तैयब को और फैजान को भी इस ओवर में अरशद इकबाल ने, और उन्हें खामोश रखा 34 पर 1। आज बॉलिंग को ज़्यादा स्ट्रेंथन किया है उन्हें। इंशा और वकास मसूद जो हैं वो शामिल हुए हैं प्लेइंग 11 में, और ये बुरा आइडिया नहीं है। आप एक डिपार्टमेंट पे ज़्यादा फोकस करें, बैटिंग को एक क्लियर माइंड दें। मोहम्मद फैजान, इखलाक दोनों अटैकिंग प्लेयर्स थे, लेकिन इखलाक आज फिर एक बार उनको नाकामी का सामना करना पड़ा। तैयब ताहिर, शुएब मलिक, कासिम अकरम, इरफान न्याजी, उसामा मीर, बैटिंग मौजूद है इनके पास। देखिए आमिर यामीन जो हैं, ये अगर सदर्न पंजाब से, ये नाम उसामा मीर के बाद आप देख सकते हैं आमिर यामीन का, ये अगर सदर्न पंजाब से सेंट्रल पंजाब की टीम में आकर खेल सकते हैं तो बिस्मिल्लाह खान को भी बैटिंग में, क्योंकि ज़रूरत ज़्यादा है आपको, खासतौर पर अब्दुल्ला शफीक और अहमद शहजाद, क्योंकि उनकी फॉर्म अच्छी नहीं थी, तो आपको एक ओपनर चाहिए था, एक आजमूदाकार ओपनर जो फॉर्म में भी हो। इमरान जूनियर इस पावर प्ले का आखिरी ओवर करने के लिए आएंगे, जो खासा मुश्किल ओवर होता है। तो फैजान जारहाना बैटिंग कर रहे हैं। ये बेहतर
एक फैसला था फैजान को लाने का और फिर पिंच हिटर के तौर पर इनको इस्तेमाल करने का वन डाउन पोजीशन पर, और इन्होंने किसी हद तक सहारा दिया भी टॉप ऑर्डर को फैजान ने। कल भी अच्छी इनिंग्स खेल रहे थे फैजान, अपनी स्ट्रोक्स का इजहार ज़रूर कर रहे थे, लेकिन दूसरे एंड से पार्टनर्स उनके जो हैं वो वापस डगआउट पे जाते रहे हैं। पार्टनरशिप बिल्कुल भी नहीं नज़र आई सेंट्रल पंजाब की जानिब से अभी तक इस टूर्नामेंट में। ये थोड़ी सी नीचे रही, लेकिन ये लेग स्टंप की लाइन से पहले गिर गई थी और ये बाउंड्री। ये वाइड हो जाएगी। ये विकेट जो है ये उतनी ज़्यादा तेज़ लगती नहीं है कल की तरह, इसमें बाउंस भी नहीं है। इसी बैट्समैनों को यहाँ पर कुछ मेहनत करना होगी रन्स बनाने के लिए, और कुछ गेंदें जो बिताना होंगी, कुछ वक्त बिताना होगा इस पिच पर, फिर आप अपने स्ट्रोक खेल सकते हैं। इसलिए तैयब ताहिर जो हैं वक्त ले रहे हैं। 12 गेंदों में उन्होंने 4 रन्स ही बनाए हैं अभी तक। बाल बाल बचे इमरान जूनियर। ये ज़्यादा अच्छी गेंद नहीं थी, और अगर ये इमरान सीनियर के दाएं बाएं से निकल जाती तो यकीनी चौका था। पेस चेंज करने की कोशिश की थी, बैक ऑफ द हैंड ये डिलीवरी कराई थी, वाकई बच गई है, वरना फैजान जिस तरह के बल्लेबाज हैं इस तरह की लूज डिलीवरी छोड़ते नहीं। फाइन लेग सर्कल में मौजूद थी तो ये यकीनी चौका हो सकता था। बहुत जल्दी शायद वेरिएशंस पे जाना चाह रहे हैं, हालांकि अच्छी बॉलिंग की है केपी ने अभी तक, विद इन स्टंप्स रखा है, अच्छी लाइन को हिट किया है। और शानदार शॉट, स्मैश कर दिया बिल्कुल बॉलर की चोटी के ऊपर से। 4 रन्स। तो पहली बार खुल के वार किया तैयब ताहिर ने। वो जानते हैं कि पावर प्ले की चंद ही गेंदें बाकी रह गई हैं, तो क्यों ना यहाँ पर दिखाया जाए अपनी बैटिंग का जलवा। लेंथ बनाई इन्होंने, क्रीज में एक स्टेप पीछे लिया था और लेंथ अच्छी मिल गई, जिसकी वजह से सीधा मारने में कामयाब हुए। तैयब ताहिर अपनी शॉट्स नहीं रोकेंगे। ये पार्टनरशिप बहुत ज़रूरी है, दोनों बल्लेबाज रन्स करना जानते हैं और जारहाना क्रिकेट भी खेलते हैं। इनका लंबा जाना बहुत ज़रूरी होगा सेंट्रल पंजाब के लिए। यहाँ इन्होंने 72 रन्स की बड़ी उम्दा इनिंग्स खेली थी रावलपिंडी में, जब सेंट्रल पंजाब का मुकाबला हुआ था खैबर पख्तूनख्वा के इस बॉलिंग अटैक से। और इस बार फिर बड़े दिलकश तरीके से खेला। हालांकि रफ्तार ज़्यादा नहीं थी इस गेंद की, लेकिन फिर भी उससे काम मिलाए और साथ साथ अपने ब्लेड को भी ओपन किया। बड़ी आला बैटिंग। समझदारी से खेल रहे हैं ये, पिक कर ली थी लेंथ जल्दी, जानते थे कि फील्डर कहाँ मौजूद है, बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे खेला, गेंद को देखा बल्ले पे आते हुए और फेस ओपन किया। ये इनकी एक अच्छी बैटिंग की एट्रीब्यूट है कि ये सिर्फ तेज शॉट हैं या हार्ड शॉट्स नहीं मारना चाहते। इनके पास ये कमाल भी है कि अच्छा बैट एंगल करते हैं। एक और उठता हुआ शॉट, एक और चौका। इस बार यॉर्कर करने के लिए गए, ओवर पिच हुई और तैयब ताहिर ने इसे फ्लिक कर दिया। तो पावर प्ले और 50 रन सेंट्रल पंजाब के मुकम्मल हुए। अच्छा फायदा उठाया इस ओवर में फील्ड की पाबंदियों का। तैयब ने 16 रन उन्हें दाग दिए 50 पर 1। इमरान जावेद
इशारा दे रहे हैं इस वक्त स्कोरर की तरफ कि पावर प्ले ख़त्म हो चुका है और अब मज़ीद 3 फील्डर्स जो हैं वो 30 गज के बाहर खड़े किए जा सकते हैं। इन दिनों जो वनडे क्रिकेट खेली जाती है 50 ओवर की क्रिकेट, उसमें आप पहले 10 ओवर्स की बैटिंग पावर प्ले के बाद सिर्फ 4 ही फील्डर दायरे के बाहर रख सकते हैं, लेकिन T20 में 5 फील्डर्स जो हैं ये बॉलर को एक एक्स्ट्रा कुशन दिया गया है। T20 अमूमन कहा जाता है कि बल्लेबाजों का खेल है, थोड़ी जो मदद है वो फील्ड में ज़रूर हो जाती है बॉलर्स की, लेकिन फिर भी बल्लेबाज कहीं ना कहीं से बाउंड्रीज ऑप्शन निकाल लाते हैं। कामरान गुलाम को अब जिम्मेदारी सौंपी गई है और ये भी एक वजह है T20 में स्पिनर्स की कामयाबी की कि उन्हें 5 फील्डर्स जो हैं वो तकरीबन हमा वक्त ही मिलते हैं पावर प्ले के बाद खुले मैदान में, जबकि वनडे क्रिकेट जो है ये स्पिनर्स के लिए मुश्किल अब खेल बन गया है। 30 ओवर तक जिसमें स्पिनर्स बॉलिंग करते हैं, ज़्यादातर उनको 4 फील्डर्स से पालना पड़ता है। और दूसरा रन हासिल किया, साहबजादा फरहान खासा पीछे खड़े हुए थे और जिस तरह 12 कहा गया है कि ये बड़ा मैदान है, यहाँ पर फील्डर्स को भी खासी तगोदौ करना पड़ती है। बहुत अच्छी रनिंग, पॉजिटिव इंटेंट, जानते थे कि फील्डर को बहुत दूर से आना पड़ेगा और अच्छी रनिंग की और एक थोड़ा सा मोमेंटम नजर आया सेंट्रल पंजाब की तरफ शिफ्ट होता। पिछला ओवर 16 रन पे गया था, आखिरी पावर प्ले का ओवर। कामरान गुलाम इनको भी हमने इस टूर्नामेंट में एक पार्ट टाइमर के तौर पर देखा है बॉलिंग करते हुए, और शायद वो वक्त आ गया है कि अब आप जो है क्रिकेट में किसी एक डिसिप्लिन के होकर रह नहीं सकते, आपके पास दूसरा हुनर भी होना चाहिए, बैटिंग के साथ बॉलिंग का भी। आपको अच्छा फील्डर भी होना चाहिए। अभी मेहरान मुमताज जो हैं वो दोनों हाथों से फील्डिंग कर रहे थे। रावलपिंडी का जो मरहला था ये अच्छा शॉट, लेकिन बगैर किसी रन के। तो आइंदा शायद चलकर जो क्रिकेटर्स की जो अगली नस्ल होगी, हम उसे ये भी बाकायदा करते हुए देखेंगे। दोनों हाथ से शायद फील्डिंग करना भी ज़रूरी हो जाएगा। ये बहुत अच्छा स्किल है आजकल मॉडर्न डे क्रिकेट में, क्योंकि कई दफ़ा बहुत टाइट सिंगल होता है, चांस होता है, और आप अगर दाएं हाथ आपका ज़्यादा डोमिनेंट है तो आपको टाइम ज़्यादा लेना पड़ जाता है। साउथ अफ्रीकन ये चीज़ काफ़ी पहले ले आए थे, ज़्यादा हमें नज़र नहीं आई इतनी। सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह एक और रन रोका कप्तान खालिद उस्मान ने। अच्छी क्रिकेट और ये बेहतर ओवर भी था कामरान गुलाम का, सिर्फ 4 रन दे गए 54 पर। ये पहला नुकसान उठाना पड़ा सेंट्रल पंजाब को। मोहम्मद इखलाक खास शॉट खेलने की पोजीशन में थे नहीं। रन्स आते रहे सेंट्रल पंजाब के लिए, और ये ताहिर फैजान अच्छी पार्टनरशिप रही इनकी। ये बहुत बड़ा ओवर था, 16 रन आए आखिरी ओवर में पावर प्ले के, और जिसकी वजह से थोड़ा सा मोमेंटम जो है वो वापस सेंट्रल पंजाब के पास आया। अब्दुल रज़ाक की बड़ी यादें हैं रावलपिंडी इस मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम से। यहाँ इन्होंने टेस्ट सेंचुरी बनाई थी जब यहाँ पहला टेस्ट मैच हुआ था 2001 में, जब पाकिस्तान की 5 सेंचुरियाँ बनी थी, तो एक अब्दुल रज़ाक ने बनाई थी। एक वनडे इंटरनेशनल मैच में भी इन्होंने सेंचुरी बनाई थी इस वेन्यू पर 2004 के सहफरी की टूर्नामेंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ। और फिर यहाँ इन्होंने कप्तानी भी की एक वनडे इंटरनेशनल मैच में पाकिस्तान की। अपनी बैटिंग का जो टैलेंट है वो रब ऑफ नहीं कर पा रहे अपनी टीम पे, लेकिन इनकी जो सर्विसेज हैं पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा रही हैं।
मुश्किलात का सामना इन्हें रहा है जब से कोच बने हैं सेंट्रल पंजाब के। इस टीम के साथ एक सवाल ये भी हम मंसूब कर सकते हैं कि अहमद दानियाल जो विकेटें ले रहे थे रावलपिंडी में, वो खेलते हुए नजर क्यों नहीं आ रहे? और ये बहुत ही अच्छा शॉट खेलते हुए नजर आए फैजान, जिनकी सलाहियत है कि ये बॉलर्स को बहुत देर तक संभलने का और सुख का सांस लेने का मौका नहीं देते। इस बार उन्होंने स्लॉग स्वीप पर छक्का लगा दिया। क्लियरली टारगेट कर रहे हैं खालिद उस्मान को, आउटसाइड ऑफ स्टंप था, लेंथ मिल गई थी, फैच किया और ये एक स्लॉग स्वीप। अच्छा बैलेंस है इनका, कोई इरादा नहीं था इनका कि गेंद नीचे रहती। इस तरह के बल्लेबाज क्रीज पे रहना जरूरी है। यार स्पिनर्स के लिए बॉलिंग करना इतना आसान नहीं है इस मुल्तान की पिच पर, जहां पर इब्तिदाई अय्याम है इस नेशनल T20 कप के। और ये बैट पर लगी, स्टंप्स के सामने थे शायद, ये बल्ले से टकरा गई। लग यही रहा है कि बल्ला इन्वॉल्व था, वरना काफी अच्छी शाउट लग रही थी। देखें यहाँ विकेट कीपर आप देख सकते हैं उन्होंने ज्यादा अपील नहीं की थी मोहम्मद हारिस ने। फैजान ने बल्ला दिखा भी दिया था अंपायर को, उनके जहन में कोई शक ना रहे। बड़ा ही सेंट्रल पंजाब की टीम एकतरफा मैच हारी थी खैबर पख्तूनख्वा से रावलपिंडी में, जब वो बाद में बैटिंग कर रहे थे। इमरान खान सीनियर ने जारहाना स्पेल किया। आज पहले बैटिंग करते हुए कितने रन्स बना सकेंगे, इसका जवाब आपको अगले ओवर में देने के लिए कमेंटेटर्स आएंगे। नए 63 पर है। For the first time in this tournament, we're seeing KP under pressure a little, courtesy to this brilliant partnership that is 62 at the moment. Kamran Ghulam into his second over is bowled well. That will be called a wide. Yes, it is. Wanted to go big again, Fizan. This looked really good for Central Punjab. Sometimes I feel he attempts too many shots. It's better than that. Still into the 9th over of this inning. And if these two stay, they will get this big total. Wide again. Slog, and that's gone all the way. Maximum 2 wides and a 6 out there. 8 of the first 3 deliveries. 71 is now Central Punjab. You look at that shot. He knows that it's dipping down. It's too full. It's allowed him to get underneath that. Well, I'll tell you what, minute changes in a team or just the order fixes a lot of problems. Down again, and Maximum again. Faizan is taking them to the cleaners. What a 50 that is. Just 27 deliveries. In fact, 29 for that. A strike rate of 175. And believe it or not, he's got 2 boundaries and 5 sixes. Yep, second by 50 for Fizan. And how well he has played.
He's dominated every time he's on the crease, using his feet correctly and depositing it into the stands. That is fantastic batting. And the changes you were talking about, minute changes, and this boy, the moment they brought him in the side and played him up the order, it has changed for Central Punjab, in the batting lineup at least. See what was happening earlier, from what we can see or notice from up here, that's gone for 4, is it? Oh, it has. Wow, this is a big over. 18 now with 1 ball to go. That Central Punjab today have allowed Faizan to get the power play. What was happening was the Central Punjab was consuming too many deliveries in the power play and not getting enough score, and that was putting pressure on the batsman to come. Here the platform set. Last ball. They're down again, and it just changes his mind. End of an expensive over with the 2 sixes and a boundary, 2 wides, 18, 9 gone. It's 81 for 1. He's been brilliant. Faizan scored his first 50 against Sindh on 21 deliveries, and this one coming off 28 deliveries. It's just been excellent for Central Punjab. Came in the place of Ahmed Shahzad, and he's just grabbed that opportunity. And he's just changed the fortune for Central Punjab. At the moment, at least in this game, as we see change in the bowling, leg spinner Maaz Khan was in this game in place of Amir Azmat. 21 years of age, 5 wickets to his name. Early days for him. Yeah, just watch out for this area. Backward point. That's the zone Tayyip Tahir loves to play it in, and with the ball spinning away, he'll try to bisect those 2 fielders. Does he have a good googly? Straight shot. That's well stopped at short cover. He's surely taken all the pace off the ball. Otherwise, that was going for 4. Have a look at Kamran Ghulam's 18-run over. That's the first 6 of the over. That's the second one right after that. And then this boundary through covers. And again, I think he's practiced that a lot. He just launches his left foot to the pitch of the ball and then swings it hard. That is poor bowling also. Just bowling in his zone. And when somebody is in that fantastic touch, he's not going to miss out on those. Have a look at that, just in his zone. That's where he likes it. And that zone, that cow corner, he fancies it. He's very strong in that area, Faizan. The way he hits it, wow. He would know Maaz a lot better than anyone else in the ground. Both of them have been the part of Laur Qalandar's side. They come up through their play development program, and they're doing a fantastic job. Faizan and Tayyip Tahir at the moment. Straight this time, another maximum. Make it 31 in the last 1.4 overs. You get a touch fall and he's backing himself. Again, same length. In his zone. Just a little outside the off stump, but the type of form he is in, everything he's touching is turning into gold. That is Faizan for you. Full toss this time. He'll get a single. Maaz is lucky he got away with it. .95 is the score. He's taken the score to almost 10 and over. It's 9.6 at the moment with last delivery. Tayyip Tahir lets it go. So in the last 2 overs, 32 have been scored by Central Punjab. It's 95 for 1 halfway through. One wicket for KP. Ahmad Ikhlaq going out to Imran Khan Senior without scoring. And since then, it's been these two, Faizan and Tayyip Tahir.
And have a look at that he has kept, Faizan has kept Tayyip Tahir quiet. That's a surprise thing for me, because we know that Tayyip Tahir is a dasher also. But all eyes on Faizan. Is on 68 of 34. Pretty long batting lineup for Central Punjab. First 5 overs got them 34 runs, and the next 5, 61. They've doubled it. And with, of course, Shoaib Malik to come, Qasim Akram to come, and you got Amir Yamin, Sama Mir can hit a few. It's all important, whatever score they put up, how good can they bowl and defend it. It's a good batting pitch, but you've got to show positive intent, and that's what we've seen. That's the good part. And then the result automatically falls in your lap when you are positive. You've got nothing to lose, so you just basically is that rock bottom feeling. That's a good shot. That's a good shot. That has been slapped. Faizan is not sparing anyone here. This is a different Central Punjab today. Yep, there is no stopping Faizan. In his zone again. And he's seeing this ball like a football. On the up, over that mid-off fielder. Placed it beautifully. Just excellent. Excellent, pure, proper hitting. There's no slogging, it's proper hitting. Oh, that's a brilliant ball. Extra bit of bounce. He's taking the shoulder of the bat. He's hit the seam. And that's just deviated the line a little bit. And that has cost Faizan his wicket. So, no complaints from him. He's done his job. He's got them into a position with 72 of just 36. He'll probably walk back with a standing ovation. Big wicket. This is what they were hoping for, to get rid of Faizan. And Server, the part-time bowler, doing it for them. Seemed like he changed his game plan. But nevertheless, a fantastic inning. 72 of 36. 7 sixes in that inning. That is some hitting. It's 99 for 2. Shoaib Malik comes out to bat with 99 runs on board, which is the 11th over in progress. It's not easy to keep on with that momentum that Faizan has created. So Tayyib will have to take lead now. He's 19 of 24, which means that Tayyib Tahir has faced 4 overs out of 20. So he now needs to cash it out. Shoaib Malik, no need to say, 477th T20 game for him. Can he get that 95 not out and break that tonight? Well, he's got 10 overs. Good to see Central Punjab waking up to the tournament. A little late, but no problem. You said it at the toss. You win the 4, you already got 1 under the belt, you get 10 points. Then you see where others end up. At the moment, KP right on top is 10 points, but you still have 5 more games to go. Server to Shoaib Malik. Just have a look at Faizan, just trying to be cheeky, looking for singles. But if you're hitting so nice, why would you do it? Very good length delivery. Came in a little. He wanted to guide it towards third area. Yeah, disappointing, yes. Because he knows that he was in for a big one. But nevertheless, an excellent inning. The man on your screen, 72 of 36. You just said that it was very important for a team like Central Punjab that they start winning the games, because they still have hope. If they win the remaining games, they can still make it to the semis.
This was disappointing to see the results before this match. Nothing was working for them. They made lots of changes. Changes in captaincy, changes in senior players being dropped off the side. I think they've done a good job coming back against a team like KP. It's huge. $101 now for 2. Abdul Razak. I don't remember when was the last time I saw you and Razak happy. You should be happy now. You're happy to see Faizan getting out and he's happy to see Faizan scoring runs. As long as you guys are happy. I'm happy. Very happy that Central are back in this game for now. And I want them to win this game and come back into the tournament. It's very important for this tournament that they stay alive. Because having somebody like Shoaib Malik in the side, it would have been very disappointing to be out of the tournament so early. End of 11, 102 for 2. Nine overs for Central Punjab. They would be hoping, they would be wishing to get to that 200 mark. They can get it. They do have enough firepower. Taib Tahir still on the crease. Irfan Niazi still to come. Amir Yamin, Qasim Akram himself. If they apply it themselves, they can get to that 200 mark from here on also. It's a better combination today for Central Punjab. They've brought in 2 fast bowlers, which was missing in the earlier games. Might change their luck. Keep an eye on that top left part of the screen. That's the zone. If you ball him outside the ostrom, Shoaib Malik can hit and time it very well there. Oh! Did that come up or what? It's just hit the bottom part of the bat. It's played onto the stumps. You just get a feeling that didn't rise as Shoaib expected it to be. But nevertheless, that's a big wicket there. That could change the course of the game. Just wanted to go too hard. Chopped onto his wicket. That's a big wicket. That's a big wicket for this youngster. Disappointment for Shoaib Malik and Central Punjab. Could only score 2 runs. It's 102 for 3 now. The captain, Qasim Akram, walks in. Central Punjab must be very careful against a side like KP. If you allow them a little space, they're not gonna miss out on that. 51 is best. Still early days. He's an all-round cricketer, but the strike rate is very impressive. 140. Qasim 5 to come. Impressive young player. They need a partnership again. They just lost 2 quick wickets. One of them Faizan and Shoaib Malik quickly after that. Because this KP side has a habit of making a comeback in any situation they're on. That's Shoaib Malik trying to hit too hard and away from the body too. Had he just timed it towards third area, that would have been different. That rattling sound of timber, no batsman wants to hear. I think, yes, you're right. You just went slightly on that back foot away from the body, trying to cut that. That's a single there. It'll surely have an effect on the actual end score for that Central Punjab has on its mind, because the set batter Faizan got out and right after him
Shoaib Malik. So now what these two are thinking, that we need to carry on for a little longer than we were supposed to earlier. Because then after this, Tayyib Tahir and Qasim Akram, you've got Amir Yamin and Usama Mir and Irfan Niazi. So you got to give them the last 4 overs to go and hit out. Slightly slower, he held to his shot and then played it for the maximum. Tayyib starts saying, leave it to me now. Just beautiful shot over that mid-off fielder. He knew that fielder is inside. Just went on with it through the line. And the force is a powerful young lad. When he hits, it stays it. It was a sore one, back of the hand delivery. Judged it well and placed it beautifully. In modern day cricket, especially T20s, you get a wicket in an over and you get hit for a 6 in the same over. You cannot sit and mourn for the 2 losses of the wickets in a T20 as a batting unit. So you carry on with that momentum. Just like this. Just like this. As if nothing's ever happened. This over was going well. And suddenly now it's given them 11 runs with 1 more ball to go. 2 different directions, 2 different results. All in the favour of Tayyib Tahir. This one a cheeky one. The paddle sweep. The shot is so effective in T20 cricket. Yeah, he's not express fast, so it allows Tayyib Tahir to just get outside the line of the ball and get into good position before the ball arrives at him. But it still requires a lot of timing. When is the exact timing when you actually create that ramp to play it around fine leg? It's down the leg side for sure. 113 for 3 after 12. कासिम अकरम है नए आने वाले बैट्समैन, कप्तान। काफी बुझे बुझे रहे हैं इस टूर्नामेंट में कप्तानी की इजाफी जिम्मेदारियों के साथ। सरवर अफरीदी ने आज भी सरप्राइज किया। पिछले मैच में भी आकर इन्होंने विकेटें ली थी जब ये खेले थे। ये हार्ड हिटिंग बैट्समैन है और ये भी अब उन खिलाड़ियों में से खुद को एक साबित करना चाहते हैं जो कि दोनों काम कर सकते हैं। अच्छा कट शॉट खेला, 4 रन्स ठीक ही था लेकिन कोई मौका नहीं इमरान जूनियर के लिए। गेम को देर से खेला और ये फेवरेट शॉट्स में से एक है कासिम अकरम के। इत्मीनान की जरूरत है कासिम अकरम को, इस बाउंड्री से उन्हें मिलेगा। ये थोड़ा सा बाहर बॉल था, हाथ चलाने का मौका मिला। थर्ड मैन का फील्डर ऊपर था और चौके के साथ इत्मीनान आएगा। जैसे मैंने कहा 117 पे 3 है, अभी भी काफी वक्त बचा है इस इनिंग्स में। अच्छा मौका है सेंट्रल पंजाब के पास एक अच्छा टोटल बनाने का। यहाँ लेकिन इनको थोड़ा सा मोहतात रहना होगा। इन पिचेस पर कट शॉट खेलना कभी भी खतरे से खाली नहीं होता, खासतौर पर ये जो पिच है। तो कल के मैच में भी ये स्पिनर को कट करते हुए प्ले डाउन हो गए थे। और शोएब मलिक आज ज्यादा देर तक विकेट पर नहीं रहे। इनसाइड एज गेंद लेग स्टंप को जाकर लगी और शायद बाउंसर की तवक्को कर रहे थे शोएब मलिक, इसलिए आप देखें तो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं थे शॉट खेलने के लिए।
दोनों पे पैर बिल्कुल ऐसा लगा जैसे जकड़े हुए थे। इस पिच पर शोएब मलिक से एक अच्छी इनिंग्स की हम तवक्को कर रहे थे और सेंट्रल पंजाब के जो इस वक्त खिलाड़ी हैं, जूनियर खिलाड़ियों को भी आज तवक्को थी। इरफान न्याजी इसके बाद खेलने के लिए आएंगे। आमिर यामीन ये अच्छा इजाफा साबित हुए हैं। इन्होंने इस टीम को कुछ इस्तेहकाम दिया, नई गेंद भी करने लगे हैं। 1-2 ओवर्स ये पावर प्ले में कर जाते हैं। विकेट भी इन्होंने ली थी कल अपने पहले ही ओवर में आकर। कल अच्छी बैटिंग भी की। ये होम ग्राउंड है, मुल्तान से ही ताल्लुक है आमिर यामीन का। लेकिन कासिम अकरम को अच्छा खेलना बहुत ज़रूरी है। अगर सेंट्रल पंजाब ने कोई अपना खोया हुआ वकार बहाल करना है, इस टीम को एक पुरसा चाहिए है। एक और जीत। लॉन्ग ऑन, डीप मिड विकेट है। ऑन साइड में तीसरे फील्डर साहबजादा फरहान है स्क्वायर लेग बाउंड्री पर। और ऐसे उठाकर खेल दिया साहबजादा फरहान। गेंद के नीचे आ जाएंगे और ये कैच हो चले नहीं। बड़ा ही आसान कैच था और बेपनाह वक्त मिला साहबजादा फरहान को। सूरज भी उनकी आंखों में नहीं था, लेकिन नई जिंदगी मिल गई यहाँ तैयब ताहिर को। शायद ज्यादा वक्त मिल गया सोचने का साहबजादा फरहान को। एक मौके पर बिल्कुल इस्तेहकाम के साथ गेंद के नीचे खड़े थे। आखिरी 2 स्टेप्स में उन्हें लगा कि शायद वो दूर हैं और बिल्कुल झटका मारा जब बॉल उनके हाथ को टकराई। ये सही टेक्निक नहीं है। बॉल को हाथों में लगने देना चाहिए, ऐसा नहीं हुआ। 121 पर 3। माज खान वो कदम जमाने की कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में। गेंद बाउंस जरूर हुई और बैकफुट पर बड़ा शानदार शॉट खेला तैयब ताहिर के लिए। ये बिल्कुल तरने वाला थी शॉट और वाइड, और उसे सही ट्रीटमेंट दिया। कम ही चूकते हैं कट शॉट पर। इस विकेट में थोड़ा सा कम पेस है, इसलिए बैटर्स को ज्यादा टाइम मिल जाता है। तो काफी पीछे बॉल थी, थोड़ा सा बाउंस ने जरूर परेशान किया, लेकिन तैयब ताहिर कट शॉट के माहिर खिलाड़ी हैं और गैप हासिल करने में कामयाब। तैयब ताहिर की कंट्रीब्यूशन बहुत अहमियत की हामिल है। इन फॉर्म बैटर हैं इस टीम के। लाहौर के जो बैट्समैन हैं, स्वीप शॉट जो है वो इतना जो है नहीं खेलते। आप बाबर आजम भी कभी कभार स्वीप शॉट खेलते हैं, लेकिन जो कट शॉट खेलने की महारत है वो नजर आती है आज भी इनमें। एक बार फिर कट शॉट खेला। ये भी लाहौर के बैट्समैन हैं कासिम अकरम, और 4 रन पा गए। माज को मुश्किल का सामना है। गेंद पीछे गिरा रहे हैं, बाहर गिरा रहे हैं इस वक्त दोनों ही बैट्समैनों की नजरों के। ये ज्यादा बेहतर कट शॉट था। इस ओवर में जो 2 बाउंड्रीज आई उसमें से बिल्कुल गेंद के ऊपर आ गए कासिम अकरम। कदमों का अच्छा इस्तेमाल, कलाई का अच्छा इस्तेमाल, लेट खेले और इसी वजह से गैप हासिल किया। हालांकि ज्यादा बड़ा गैप नहीं है 2 फील्डर्स के दरमियान, लेकिन अच्छी एक्सिक्यूशन कट शॉट की। वो हवा में खेला और मिल गए 2 हाथ, जहां कासिम अकरम को जाना होगा। बहुत ही अच्छा ये कैच था। ये बल्ले पर खासा नीचे लगी, पूरी तरह हावी होने की कोशिश कर रहे थे कासिम अकरम, और बॉलर्स को उन्होंने जरूरत से ज्यादा आसान लिया। ये गुगली थी दरअसल। जी हाँ, गुगली थी। थोड़ी सी नातजुर्बेकारी यहाँ पे कासिम अकरम की। 9 रन आ चुके थे ओवर में। ओवर का अच्छा इख्तिताम कर सकते थे, लेकिन अपनी विकेट से हाथ धो बैठे और केपीके को गेम में वापसी का मौका दे दिया उन्होंने इस गलती से। सेंट्रल पंजाब 130 पर 4।
छठा नंबर जो है इरफानुल्लाह न्याजी को ही मिला है इस चैंपियनशिप में। 11 मैचों में 128 रन हैं इरफान न्याजी के, 18 की औसत है, लेकिन स्ट्राइक रेट वो इनका खासा है और ये सबसे बड़े हिटर हैं इस टीम के। मास खान ये भी नौजवान है और ये पैड पर लगी, एक और विकेट मिल जाएगी। अंपायर को कोई शुबा नहीं था, इमरान जावेद ने फौरन यहाँ में हाँ मिला दी मास खान के और इस तरह 130 पर ये 5वीं विकेट गिर गई और हैट्रिक पर आ गए मास खान। एक और गूगली थी, बिल्कुल इसे समझ नहीं पाए इरफान न्याजी। मास खान तो काफी श्योर थे इस डिसीजन के लिए और राशिद रियाज ने उनकी हाँ में हाँ मिलाई। इरफान न्याजी काफी तवक्कुआत वाबस्ता थी लेकिन बगैर स्कोरर्स को जहमत दिए आउट हो गए। 130 पर 5 खिलाड़ी आउट। साल इनकी उम्र है आमिर यामीन, 107 मैचेस खेल चुके हैं, काफी तजर्बा है, 17 की एवरेज है और 140 का स्ट्राइक रेट। एक निफ्ट सेंचुरी भी बना रखी है इन्होंने यहाँ, लेकिन क्या ये हैट्रिक बचा सकते हैं? आमिर यामीन पर दबाव बढ़ाया जा रहा है, स्लिप लाई गई है इस वक्त। क्या दोबारा गूगली करने के लिए जाएंगे? मजीद इंतजार कराना चाहते हैं नए बैट्समैन को, इसमें कोई मुजायका नहीं। और ये जो है ये मिड विकेट के फील्डर को और ला सकते हैं आगे। और इस बार क्या पहले पैड पर लगी थी? मास खान ने एक सवाल पूछा था लेकिन उनको अंदाजा हो गया था कि ये बल्ले से भी लगी है, लेकिन बहुत ही शानदार ओवर। और होता है मास खान या कोई भी लेग स्पिनर जब टीम में हो वो रन जरूर देगा लेकिन आपको विकेट लेकर देगा। एक और गूगली बैट एंड पैड साथ मिलाकर खेले, 2 आवाजें आई। देखिए राशिद का भी यही ख्याल था कि पल्ला पहले लगा। अच्छी हिकमत अमली थी, स्लिप रखी हुई थी लेकिन उसके बावजूद गूगली करा दी, धोखे में रखा बैट्समैन को। काफी नजदीकी मामला था लेकिन अच्छा ओवर रहा मास का। लेग स्पिनर की यही खासियत है। लेकिन तारिक ये थोड़ी सी मायूसी जरूर होती है कि जो पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटर्स हैं, जो स्टैब्लिश्ड हैं और जो नए भी आ रहे हैं, बिल्कुल मास खान के एक्शन से वाजे नजर आ रहा है कि वो गूगली कर रहे हैं लेकिन वो पिक करने में नाकाम रहे। कासिम अकरम काफी क्रिकेट खेल चुके हैं, इरफान न्याजी भी काफी अरसे से सिस्टम का हिस्सा हैं। वार किया इस बार जोरदार तरीके से और ये इंजिमाम एनक्लोजर के सामने छक्का। तैयब ताहिर उन्होंने ये फैसला किया है कि वो अपने एंड से तेज रन्स बनाते रहेंगे। दूसरे एंड पर गो के विकेटें गिरती जा रही हैं। सरवर अफरीदी की मीडियम पेस को बिल्कुल भी नहीं अलाउ करना चाहते कि वो कुछ सस्ते ओवर कर जाएं। लेंथ बॉल था, स्लॉट में था, अपना बायां पैर क्लियर किया और बिल्कुल सीधा तीर की तरह साइड स्क्रीन के पास दे मारा। अच्छा शॉट था तैयब ताहिर का। एक और शॉट उसी रुख पर खेला था लेकिन इस बार टाइमिंग का फुकदान था। यहाँ 2 विकेटें ये देखिए जगह बाद दीगर हासिल की। पहले कैच लिया अपनी गेंद पर और ये भी गुगली थी, बिल्कुल सर गिर गया था सामने की जानिब। एक और गुगली की लेकिन इस बार बल्ला पहले लगा। और दोनों 2 चीजें यहाँ पे काबिले गौर हैं कि जो लेग स्पिनर्स हैं पाकिस्तान के वो भी गुगली करने में ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं। 2 की कॉल है लेकिन तैयब
एक ही रन भागेंगे। और लेकिन जब वो लेग स्पिनर करते हैं तो ना उनकी कंसिस्टेंसी रहती है, ना ज्यादा बॉल ब्रेक होता है। ओवर के आगाज में माज ने लेग ब्रेक की थी, लेकिन शॉर्ट और वाइड और 2 चौके। इसी तरह जब गूगली करते हैं शायद उनका एक्शन ज्यादा अच्छे तरीके से फिनिश होता है। यार एक वजह यह भी है कि T20 क्योंकि अब ज्यादातर क्रिकेट यही खेली जाती है, क्लब क्रिकेट में भी, तो बैट्समैन ज्यादा टर्न करने की कोशिश करते भी नहीं है। स्पिनर ज्यादा टर्न करने से गुरेज करते हैं क्योंकि रूम मिल जाता है बैट्समैन को। और यहाँ एक रन मिल गया तैयब ताहिर को, तो रूम देने से गुरेज करते हैं स्पिनर्स ऑफ स्टंप के बाहर। अभी उस्मान कादिर जो श्रीलंका के खिलाफ स्पेल कर रहे थे गूगली पर, उनने विकेट भी हासिल की सेट राजापक्से की, और गूगली पर अच्छा कंट्रोल भी था। लेकिन लेग स्पिन वो बहुत टर्न कर रहे थे, कंट्रोल इतना अच्छा नहीं था। ये किंगडम वैली आप जा सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट पर और इनामात जीत सकते हैं। तारिक उस्मान के बारे में कहा जा सकता है कि उनकी जो लेग स्पिनर है वो काफी टर्न होती है, लेकिन कंसिस्टेंसी का फुकदान है उनमें भी। कम क्रिकेट खेले हैं, ज्यादा लंबी क्रिकेट काफी अरसे से नहीं खेले। लेकिन बैटर्स की जो अप्रोच है स्पिन के अगेंस्ट वो बहुत ज्यादा एक ये अच्छा शॉट खेला इस बार और वहां पर अच्छा रोकने में भी कामयाब हुए। 2 रन खालिद उस्मान ने अपनी टीम के लिए मजीद बचाए। मोहम्मद सरवर आफरीदी का तीसरा ओवर जाता रहा 142 पे 5। अच्छी इनिंग्स खेली फैजान ने। तैयब ताहिर ने भी अपनी अच्छी फॉर्म का सिलसिला जारी रखा हुआ है, यहां पर उनकी कंट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट होगी। आखिरी रेकग्नाइज बैटिंग पेयर है, उसामा मीर कुछ बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन 5 ओवर्स का खेल बचा है और यहाँ इस पार्टनरशिप की अहमियत काफी ज्यादा है। वकास मकसूद भी बैटिंग कर सकते हैं और ये भी बड़ी हद तक मुमकिन है कि उनको अगली विकेट गिरने के बाद भेज दिया जाए उसामा मीर से भी पहले। लेग स्पिनर जो हैं वो अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे। यहाँ लेग स्पिनर्स की चांदी रही है मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में। यहाँ दानिश कनेरिया ने 3 बार टेस्ट मैचों में 5-5 विकेटें हासिल की और अनिल कुंबले ने यहाँ 6 विकेटें हासिल की थी पाकिस्तान के खिलाफ, जो 2004 का टेस्ट मैच था, तारीखी टेस्ट मैच। और दानिश कनेरिया ने दरअसल दोनों इनिंग्स में 6-6 विकेटें ली थी, जो फर्स्ट एवर टेस्ट मैच था बांग्लादेश के अगेंस्ट। कट करने के लिए गए, इस बार लेग ब्रेक थी और स्टंप्स की लाइन से ही कट करने की नाकाम कोशिश की, कैच दे बैठे। और विकेट कीपर के लिए भी ताली बजनी चाहिए जिन्होंने आला तरीके से इसे कलेक्ट किया। काफी बड़ी डिफ्लेक्शन थी, अच्छा कैच हारिस का, अपने ग्लव्स को बिल्कुल सही जगह पे रखा जहां एंटिसिपेट कर रहे थे बॉल आएगी एज लगने के बाद। आमिर यामीन की इनिंग्स का भी खात्मा, विकेटों के बीच से कट खेला लेकिन नाकाम रहे एक मरतबा फिर। सेंटर पंजाब 142 पर 6। मुल्तान में आज क्योंकि हफ्तावार तातील है, इतवार का दिन है, लोग आ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट मैच देखने के लिए। इस स्टेडियम के अतराफ में भी अब आबादी होने लगी है, लोग शहर से भी आते हैं। यहाँ जब PSL के मुकाबले हुए थे तो
बेहद रौनक रही थी। और ये स्टेडियम जो है, हमने इसका एक न्यायी रूप देखा था। 30 रन ज्यादा से ज्यादा स्कोर है उसामा का। एवरेज और स्ट्राइक रेट कुछ खास नहीं। लेकिन स्ट्राइक रेट आज माज खान का बहुत खास है। ये चौथी विकेट ले गए और तकरीबन खुद को यॉक कराया। बड़ी लाजवाब बॉलिंग, लेग स्पिनर ने इस मैच को बिल्कुल सर के बल कर दिया है। सेंट्रल पंजाब की टीम और उनकी बैटिंग एक मरतबा फिर सरनिगू। पिछले 6 गेंदों में 4 खिलाड़ियों को आउट कर गए हैं मुआज खान। एक और गूगली, एक और बैटर बिल्कुल भी बेबस नजर आए, बिल्कुल धोखा खा गए इस वेरिएशन से। खुद भी लेग स्पिनर है उसामा मीर, लेकिन मास की बॉलिंग का कोई जवाब नहीं था उनके पास। 142 पे 7। वकास मकसूद को आपने याद किया और आ गए बैटिंग करने के लिए। वकास ये अच्छे स्ट्राइकर हैं और आज इस सीजन में अपना पहला मैच खेलेंगे सेंट्रल पंजाब के लिए और ये हैट्रिक पर हैं। वकास खान को 2 बार हैट्रिक का मौका मिला 2 ओवर्स में, और ऐसा भी T20 मैच में कम ही देखने को मिलता है। देखिए एक और गुगली जिससे काम तमाम हुआ। वो खासी तेज गुगली करते हैं, हालांकि ज्यादातर जो लेग स्पिनर हैं वो गुगली छोड़कर करते हैं गेम को। ये तो बिल्कुल हाफ वॉली थी तारिक, ये कहना होगा। सामा बिल्कुल बेबस नजर आए। एक और गुगली थी, लेकिन इस पर तो तैयब ताहिर की कट शॉट, और तैयब बिल्कुल अकेले रह गए हैं दूसरे एंड पर। देखना होगा, काफी वक्त बचा अभी इस इनिंग्स में। तैयब क्या हिकमत अमली लेकर आते हैं बाकी मानदा 4.1 ओवर्स में। उठता हुआ शॉट खेला और ये गेंद जाएगी सर बसर। आज का सबसे बड़ा छक्का और ये सबसे बड़ी इनिंग्स भी है आज के दिन की। तमाशाई बेहद खुश हुए तैयब ताहिर के लिए, जो पहले सदर्न पंजाब के लिए इसी मैदान पर खेलते रहे हैं। उन्होंने 19 सेंचुरी का मार्का यहां पर मार लिया। तीसरा छक्का लगाया है तैयब ताहिर ने। 149 पर 7। देखिए बाहर आए, गेंद की पिच पर पहुंचकर उन्होंने वार किया, और जब आप पिच पर पहुंच जाते हैं फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, हाँ गुगली हो, लेग ब्रेक हो। Resilience continues from both sides. Arshad Iqbal back in attack. Given away 7 in 2 overs. Pretty economical. Suddenly, Central Punjab nosedived. The last time I was sitting on the seat, they were going great guns at the end of 12 overs. And the 2 wickets here. He was on a hat-trick. And then a wrong one for Osama Mir. He didn't get it at all through the gate. He's bowled brilliantly. He's brought them back into the game, Mars.
Now it's only Tayyib Tahir who probably will look to bat the remaining 3.5 overs somehow with the tail. Got to play all the 20 overs. That's so important. After getting that kind of start, you're 149 right now. It's a catch it sound, but it's away from the fielder. Mars back in playing 11 for KP. 150 up for Central Punjab. He's bowled tremendously well. Yes, he went for runs, but that you can associate with a leg spinner. He'll buy you wickets. That's more important. Deaf International Cricket Champions Trophy 2022, starting from 1st October till 9th October. A platform to showcase talent. Angry with himself, wanted to pick that up over short fine leg. He hasn't really had a very good view from standing at the non-strikers watching the wickets fall. Starting from Shoaib Malik's wicket all the way down to Usama Mir. .95 for 1 after 10 overs, and look at that, 16.3, and they're 150 for 7. It's been a landslide. Didn't get hold of it, but he's still clear the inner field. He'll come back for 2. He can attempt 3, but he doesn't want to. He wants to keep as much strike as possible, which is fair enough. Yeah, that's wise, not exposing Waqas to KP bowlers. He's well settled in, 50 or 40. Has been doing all the talking with the bat for Central Punjab so far in this tournament, and even in this match, they did hit a bit of snag. But runs and playing all the overs, as you mentioned, is very crucial for Central Punjab. That should be a boundary. Should be a boundary. That's not a very good ball from Arshad Iqbal. Too much width, too short. And Tayyib Tahir is too good for that. Yeah, you would expect him to go fuller within the stumps. He's been playing shots off the back foot all day long today, and this is a surface where you'll get punished just like that. These are free runs KP have been giving every now and then. He's angry. You can see the agony. He'll keep on fighting, Tayyib Tahir. This time squarer, 4 more. He's playing a different game, Tayyib Tahir. I'll tell you that much. 7 boundaries, 3 sixes. He's 63, and he's going on. It's beautifully placed behind square this time. He's reading the length really well. 17 gone, Central Punjab, 160. Just waited for it and placed it behind square. Again beating that patroller at the boundary. This length, it's not going to help. It's always deep in the crease. Love to create that sort of leverage to play on the back foot. We expect more people to come in once from tomorrow we start the day-night games. The first one starts at 3, second one at 7:30. So it's much cooler. Night games, floodlights, everything suits. People come back from work. Mars into his final over. Down the wicket and a big shot. Waqas Maqsood wants a piece of it. And if you can hit it that way, why not? Good intent from Waqas, just bouncing outside the crease, reaching the pitch of the delivery. Tayyib needs that sort of support from him. And look at that, just created that room through the line. That's a good hit.
Good part is that Central Punjab is still continuing with that 9.67 run rate. It's just the wickets column. They don't have many. Quick single. Good call from Tayyab Tahir. That's the positive intent. You lose wickets and you keep losing them. If you look at their fall of wickets now, first wicket fell at 1 and then a good partnership. 99 for 2, 102 for 3, 130 for 4, 130 for 5, 142 for 6, 142 for 7. They've been losing wickets in pairs, but they're refusing to give up on the run rate. They still have 2 overs after this. Oh, it's a good shot. It should be out. Should be out. Oh, he's dropped again. He has got some luck today, Tayyab Tahir. Second time he's been dropped. His heart is now the size of a football. Sluggish fielding from KP. They've given them way too many chances, especially to this man. He had played a blistering knock. That's in and out. Top edge. Runs count. They might not come back for 2. Here they are. Tayyab Tahir trusts Waqas Maqsood's batting here. There's lots happening here in this over. A dropped opportunity, a 6, couple of runs, 10 already in the over, 2 balls to go. Could have been a fifer for Mars. On the move, never stable. Oh, one-handed, that's gone maximum again. That's some good hitting from Waqas Maqsood. He's teaching the middle order how to bat here against Mars. And Mars finding it a touch difficult to bowl to the left-hander. He was commanding against the right-handers. Again, the use of feet. He was never near the pitch of the delivery, but he managed it to put enough below, and it travelled over the boundary. The resilience is on. They're not giving up. They could manage something around 190, 195. I think their bowlers will be happy. He's taken 4 wickets, Mars, but he's gone for 46. 1 more ball to go. And he's been sent back, dot ball. So 16 of the over, 176 for 7. They had plenty of options. Khyber Pakhtunkhwa, standout Mars Khan, he went for runs, 46, picked up 4 wickets. Nothing much for the Pacers. Imran Jr. and Senior grabbed 1, and Sarwa 1. Economy rate has been on a higher side today. And it's not what you associate. Look at that, Arshad Iqbal. He has bowled decently. 3 overs, just 18. Kept things under check. For Central Punjab, they had a different plan today. There's 2 more overs to go. Can they finish strong? That's the question, and it heavily relies on this man. 2 regions I feel he's going to target. One is over cover, and the other one is just over fine leg. Which one is he choosing? Oh, he tried to go mid-wicket. That didn't really get up onto him. 11 balls in the innings. Yeah, with Imran Khan Senior, you might prefer to play him off the front foot. He nips back in, got decent pace, reads the game well. There'll be some challenge to keep Tayyab Tahir quiet in these 11 deliveries. He can ramp, he's played shots all over the ground. 360 batting today. Got 1 in the deep, patrolling, long on, long off. Deep mid-wicket, deep square leg. Plenty of pockets to grab runs. He's hit it straight, he's hit it hard. That should be 4, and it is.
brute force there from Tayyip Tahir. Races to 68 now with 8 boundaries and 3 sixes. Was a good delivery, but a better execution. Just stayed where he was, cleared the front leg as he was expecting a fuller delivery. And look at that follow through. That's from where the pace generated. Split the two fielders. It's in the air. Another opportunity. Oh no, it's going over. Maximum again. Wow, last 17 balls have got them 44. And takes Tayyip Tahir into the 70s. 74 with 4 sixes, 8 boundaries. And Central Punjab is going 10 runs and over. He's got the lady luck shining on him today. Miss it. He's also traveling over the boundary. What a superb innings he's playing. Just has that jab, strong wrist, and a good follow through. Very stable. He's got away with it. Tayyip Tahir didn't chase that one, expecting that the umpire would rule in his favour. Very marginal. 2 balls to go. These are the head. Just the wristy work. Wasn't a full follow through shot. Not his wrist though. He's got a good wrist as well. Imran Khan Senior. Look at those forearms. A little late in the decision, but that's wide. Couldn't get away with this one. The square leg umpire says it's over the head. You get hit for a few, then you try to stay away from that bat swing. He's mixing it up. This was a wide Yorker. This time just taking the pace off into the surface. But yeah, had a bounce. I remember listening in the opener, somebody saying Not happy. giant coming in. No fast bowler will ever be. Slightly slower one, waited for it. And takes a single. .12 already off this over, just one more to go. .75 of 48. Has been the lone warrior for Central Punjab throughout this tournament. What a superb innings he's playing today. Tell you what, Marina, at this rate, I don't doubt they get to 200. They need 12 runs of 7 deliveries. It's very possible because they're scoring 10 and over. They should be eyeing that, for sure. You got to give it to Waqas Maqsood. Wickets were tumbling from the other end. He's just come and completely changed everything and taken the pressure back onto the bowling side. End of the over, 19 gone, 189 for 7. Was thinking Arshad Iqbal might get an over. 3 overs, none for 18. 6 runs and over. He was very economical. He's given it to Imran Jr. Now his lack of pace might be an advantage for him, but that can also be trouble for KP if someone reads it right. You see the lack of pace.
Twice he did bowl the last over in this tournament and had been very successful in hitting the right areas. Change of pace again. It's very important to hit that right length, the back of hand delivery. I know Waqas Maqsood has hit 2 sixes, but the right thing probably to do would be give Tayyip Tahir the strike. Oh, he's giving him out. That's what I'm trying to say. Don't waste 2 deliveries. The third one would be for the new batter. Gotta give Tayyip Tahir the strike. You'll get slower deliveries when Imran Jr. is bowling. That's wicket number 8 at 189. Valuable 2 deliveries wasted. Just trying to go long, and rightly said. I should have rotated the strike and bring back the guy on 75. Again, another slow one. Just the length. Never reached him. Way too early through the shot. No problems at the umpire's end. The new batter will have to take the strike now. He played a good hand though. Waqas gone on 18. Central Punjab 189 for 8. Ali Asman, the new batter. Just now in the draft for the PJL, the Pakistan Junior League, he was the first ever pick, so his name goes down into the record in the elite category. That's very, very dangerously played. He's almost played it onto the leg stump, but he's got 4. That has been the story for Central Punjab. They've been very gutsy today. I was expecting a fuller one. That connection, that was really important. Otherwise, it could have been another wicket for Imran Jr. Into the 190s, Central Punjab. 193 is the highest score this season. It's a good short ball. I think it's at a sharp rise, just one for the over. It's a good follow-up delivery. Just following the batter. Pitched it short. Good carry though. There's 2 more to go. Should look to go big or give strike to Tayyip Tahir. Yeah, he hasn't faced a single ball in this over. This would have been a wide, but nicely done by Imran Jr. Followed the batter. Oh, come on. Come on. Come on. That's just suicide. He was trying to get to strike. And the non-strikers haven't done any favors. 4 dot balls from tailenders. And eventually Tayyip Tahir has run out. But what a knock he's played, Marina. 75 of 48 with 8 boundaries and 4 sixes. Yeah, he just only could hope that Haris missed those stumps. Wanted to come back on strike. It was a gift actually for KP, but he has been superb. Great display of his batting skills. 75. Managed to put Central Punjab at a very good slot. 193 for 9. And then Shah, last ball. Oh, it would have been a wide, but he's put back to it. Will be out and gone. So 20 overs and Central Punjab are all out for 193 on the board. Don't take it away from them. They've done a brilliant job. Started off superbly, and then they started showing shades of what they've been doing in the tournament in between. And then Tayyip Tahir took them to a lot of respectability in terms of score.
Few glitches for KP, but have a look at that. Another superb last over from Imran Jr. Only giving away 4 runs and managed to get 2 wickets. Central Punjab will be happy with the way things have gone. 193 on this surface with a good bowling lineup today. They've got 2 pacers added to the playing 11. They do have to work hard for it. But KP, a bit sluggish in the field. They've got the lineup who can chase things down, and they have been with the winning streak. It's not going to be easy for Central Punjab. But yes, that's how things unfolded. 72 for Mohammad Fizan right at the top. Mohammad Akhlaq, another failure. Tayyib Tahir, he has been exceptional throughout. 75 of 48. And then nothing much to talk about. Waqas Maqsood, he played a cameo. 18 of 11. They managed to get 193 in their 20-over quota. Khyber Pakhtunkhwa, the economy tells you how Central Punjab attacked them. 3 for Mohammad Imran Jr. He was superb in the last over. 4 for the leg spinner, Maaz Khan. And they contained on 193. Okay, highlights. Could we go to highlights then? Let's roll to highlights, please. It's going to be a good contest between Khyber Pakhtunkhwa and Central Punjab. They've got a very formidable batting lineup. Mohammad Fizan, 72. Mohammad Fizan will be joining us. There he is. Fizan, बहुत शानदार इनिंग्स आपने खेली आज. बैटिंग की इंटेंशन में क्या डिफरेंस था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि एक बार फिर मैंने अच्छा परफॉर्म किया. आज विकेट थोड़ा वैसा नहीं था कि बॉल अच्छी तरह नहीं आ रहा था, थोड़ा सा ऊपर नीचे रह रहा था. तो पहले यही था कि जो बॉल मिलेगी उसको जिधर भी आएगी उधर ही मारेंगे, और सर्कल के बाद जो स्पिनर है उन पे ये था कि जो भी मुंह में देंगे उनको मारूंगा. आपने सरफेस की बात की, थोड़ा सा ये बताएं कि कितनी जल्दी एडजस्ट करना पड़ता है अगर आपके मुताबिक गेंद नहीं आ रहा होता? ये तो ऐसे ही है कि आप जाते ही 1-2 बॉल चेक करते हैं कैसा आ रहा है विकेट, तो आपको पता चल जाता है कि ये कैसा विकेट है, यहाँ पे खुले शॉट लगेंगे या अकॉर्डिंग टू बॉल. आपने आज 7 छक्के मारे हैं, इसकी स्पेशल प्रैक्टिस करते हैं या आपकी नेचुरल ये एबिलिटी है? नहीं जी, प्रैक्टिस भी करता हूँ और नेचुरल भी है. ये टोटल आपको क्या लगता है डिफेंड कर पाएंगे सरफेस के हिसाब से? जी, आज हमने एक बॉलर ज़्यादा खिलाया तो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि जीतें. अच्छी बॉलिंग है. शुक्रिया, बहुत अच्छा खेले आप. थैंक यू. थैंक यू. Superb innings from Mohammad Fizan right at the top, and that's how it set the tone. These are the highlights how things started for this match. Akhlaq, again another failure for him. Couldn't really get into the position to play that shot. And then it was some superb batting and some loose bowling as well from KP that kept the runs flowing. Fizan was joined by Tayyib Tahir, and they too together put immense pressure on the KP formidable lineup. Some really risky work from Tayyib Tahir. Fizan, he took the long handle and he was going after the bowlers. Spinners, even the fast bowlers were put away for the boundaries. He kept on ticking the scoreboard. Fizan using the long handle, he played a superb innings to set the tone for Central Punjab. Few jabs over the infield. This was a brilliant take from Mohammad Haris behind the stumps. Server getting the second one, and that Shoaib Malik, a big wicket. At this moment, KP thought that they might have the momentum back, but the runs never stopped. Central Punjab had a whole different intention today. They wanted to go big, and they did. Tayyib Tahir was given few chances. This was the first one. An easy catch put down by Farhan. He managed to take the momentum on, never stopped. Runs and boundaries kept on flowing. That was a good take by Maaz. He was brought in the attack. He went for runs, but what he did was hit stumps with
Tayyip Tahir, on the other hand, kept the resilience on. And brilliant bowling from Maz. That's what you want to see from a leg spinner. That was a beauty. Castled Usama Mir. KP for a moment managed to get things back in their favour. But the batting display was on. Exceptional batting from Tayyip Tahir. For a moment he never felt out of touch. And Waqas with a cameo, scoring 18 just off 11. Few miss hits. This was another drop, a costly one. The boundaries kept on flowing, and that's how Imran Jr. started his last over. Ali Asman with a very gutsy shot, but this was how things came end for Tayyip Tahir. A brilliant knock to end, but you have to give it to Imran Jr. with a superb over, just giving 4 away, grabbing 2 wickets. And that's how Central Punjab managed to post 193. KP will be delighted. Confirmation, Central Punjab taking on Khyber Pakhtunkhwa in Kingdom Valley National T20 match 19. They need 194 to win at 9.70. It won't going to be easy, but they have to work hard. We'll take a break and we'll join you for the run chase from Pindi Stadium. Khyber Pakhtunkhwa, Central Punjab. And this is an all-important game for CP.
They need to stay alive in this tournament. They need to win this. Have a look at their batting card. It's been seesaw for them. They started off very well, made some changes in the batting order. Faizan was spectacular, 72 of 36. Tayyib Tahir, he finished well, 75 of 48. These two helped the side get to 193. Rest of them came in and went back. Bowling felt the pressure probably for the first time in the tournament, and they went for runs, and quite a few of them in double figures in terms of economy. 3 wickets for Mohammad Imran Jr. in the last over, bowled very well, but 4 for 46. Maaz Khan led the way. So now it's up to Qasim Akram and men. Can they replicate the heroics they've done with the bat? They need to bowl very well on a good batting track. And I suppose, if you ask me, they need to keep things tight. When runs don't come, the batting side will take chances. If you try too much, you'll probably lose your way. Sahibzada, Farhan and Haris, the usual openers for KP. They haven't lost a game yet. 194 is the target to win this match and keep their winning streak and their #1 position in the points table intact. Central Punjab will be looking to change that. Ali Yunus joins us. The credit has to be given to the central batters, Faizan and Tayyib Tahir. 72 for Faizan, 75 for Tayyib Tahir. And this is probably the first time that we've seen KP under pressure. They felt the heat. They were average in the fielding. They dropped a few catches. At one point, we all thought that they might Central get to that 200 easily. They pulled up things, but then again gave it away in the end. Mohammad Haris, just look at the strike rate, 134, very impressive. Best of 79, still early days for him. Sahibzada Farhan dropped an important catch of Tayyib Tahir. He'll have to make it up to that. 1,317 runs, strike rate 115 is better than that. The best of 78. Amir Yamin, 32 years of age, best of 4 for 5. Yeah, we expect that from him because he swings the new ball. He's got that in-dipper. That can be very, very dangerous for the new batters. And Central would be hoping that he would provide that early start they're looking for, because KP side, you can never write them off. Even if you've scored 193 runs, you're never safe against a side like KP. They have to bowl well. Umpire says, let's play. You know, the thing that goes in the favour of Central Punjab is that any score above 180 has not been chased in this tournament. But this is a different pitch. This is a very good batting pitch. That's Kingdom Valley National T20 Cup. Khyber Pakhtunkhwa need 194 runs to win of 120 deliveries. That swing early on for Amir Yamin, that in-dipper. It brings the ball into the batters. That has been his reason for the success all over the years. Shoaib Malik was disappointed today. And have a look, Abdul Razak there. He's very animated. He's in the game. He's probably guiding the young captain along, because they know that this is a very important game if they have to stay in the game in this tournament. Punched off the back foot. This is such a good pitch to pad on, I tell you. The ball comes nicely onto the bat. Not much bounce also. It's perfect for batting though. And we saw that how Faizan played and Tayyib Tahir, although he was given that opportunity by the man on your screen. Dropped a sitter. It was a simple catch he dropped, and after that Tayyib Tahir never looked back. And that has costed KP around 30 runs extra. They could have easily managed to hold them at 160 to 65. Outside the off stump, in the gap. First runs for Sahibzada Farhan and KP. This will run away for the first boundary.
That's the type of start they're hoping for from their openers. He's due runs. Definitely Saibzada Farhan outside the off stump. Gentle pace. Not quite timing it, but still earning 4 runs. Power play would be the key for KP. They're a busy side. They'll keep this scoreboard moving even with the singles. Try to keep the pressure on. I think the first half an hour of the play will decide where we're heading for both sides. To set the tone in a chase, they need to have a good power play. 9.78 is the required. And to maintain that through and through, it's not an easy task. But if you get a good power play going, then you can relax yourself a little between over 7 and 15. And I'm pretty sure winning 5 out of 5, they already know what has to be done. But from Central Punjab's point of view, they need to be on the money. You know, not getting wickets, but be on the money. Don't give away freebies. They'll have to ball up good for all 20 overs because we know that this KB side, they're a very resilient side. They never give up. Whenever you think you're in the game, you're on top of them, they'll make a comeback. That is why we see that Abdul Razak was so animated. He was so involved in the game because of their opponent. Abdul Rahman, the coach for them. Rafatullah Mohammad also, the batting consultant. That is handsome. That is beautiful. Off the back foot, in the gap. Saibzada Farhan making it look so easy. That is top-class batting. Yes, he's got to cover up for that drop catch of Tayyab Tahir. But that's just something to say. As a batter, he'll surely try to do what he does best. Off the back foot, just punching that through cover. I'm more interested in what Haris does. Haris has got the talent, but you just feel that he's been trying a little too much. Shuffling too much in the crease earlier on with the new ball. He's thrown his wicket a couple of times trying to ramp shot a fast bowler when the ball is new. Or trying to go very hard at the ball and getting caught at mid-on. So it's very, very important how he approaches this. Waqas Maqsood is your new bowler. Central Punjab have got him into the 11. He has looked good with the bat. 2 massive sixes. And he is going to bowl his first ball this season. He's very experienced, Waqas Maqsood, the bowler for every condition. It's got lots of varieties. Waqas Maqsood bowls those slower ones. He's always on the target, always that go-getter, the trier. Gives up 100% every time. That's a good change for Central. Probably this was the part that was missing in their bowling lineup. Now just strengthening more on the onside. Final leg push back, third man in the circle, and a deep square leg. When Haris is on strike. They're wide outside the off stump. Yeah, the point that you made earlier, again going too hard, Haris. This is sort of a pitch that you can always time the ball and you will get the value. Just how Saibzada Farhan played in the last over, those 2 punches off the back foot. Here again, just going hard at it. Maybe just look to time it, you will get runs. Good start from Waqas.
keeping things tight again. I would be repeating myself. Just stay on the money. Enforce those mistakes from the batters when runs don't come or boundaries don't come. You try 6 different deliveries, you'll be asking for trouble. If something's working against a batter, just keep bowling that. Keep asking questions, keep testing him right there. I wouldn't mind a slip actually. I know the ball isn't moving sideways, but it's just that he's going hard at it. Four dot balls. You bowl 2 more, you have to score 194 in 19 overs. Smiling, because he knows probably if he stays on, this is such a good pitch to bat on that he will get runs. Qasim Akram, young captain, although things have not gone his way, his team's way, but I'm sure he will have a lot to learn from this tournament, from this man on the right, Shoaib Malik. They're making sure that they've got every fielder placed at the right position. So now you see Ali, 4 dot balls here and 2 dot balls in the previous over, 6 dot balls in 1.4 overs. This is the moment now the batsman is itching. He wants a boundary. The field is being changed now. The deep square leg has gone squarer. He's now deep mid-wicket. Let's see what Haris will try. That's the kind of shot you want to play. That's how good the ball comes onto the bat here. The boundary that they were searching. So let them find those shots. As a bowler, you've done well. 1 more ball to go. Not sure that was the right choice of the delivery from Waqas. You've got field set on the onside, and if you ball outside the off stump with everyone inside the circle, you're always asking for trouble. He set a field that you normally set for an off spinner. There's a deep mid-wicket, deep square leg in place, 45 inside the circle. Just a couple of good innings for Haris in this tournament, 33 and 37. Gone. Oh, dropped. That was going into the hands straight away. Is that the captain himself? This is the area where Haris loses his wicket and they have let that go. No, that's not him. Anayan Shah has dropped the catch. End of the over. 14 for none. He's disappointed, rightly so. He's put the pressure on Haris. He's forced him to play a wrong shot. Have a look at that. Went straight. Oh, the young lad, Hunain Shah, the younger brother of Naseem Shah. And that's the difference. You got to take your chances against this side. You don't want to be giving extra opportunities to these batters. That can be a costly miss. Haris is searching for the form, and if you give him an extra life, it's not a good news for you. 2 overs gone, 14 for none. Amir Yamin shapes the ball in. He's good at that. First over went for 10. I like the intensity of this game. Sahibzada Farhan, he's had a good tournament. 53, 45, 48, the good scores. And good strike rates too. This is a different game. This is a good pitch. He should look to get a big one here. He has to make it up for the drop catch. Fielder of third is inside the circle for him. This is what I'm talking about. That you don't want to give away freebies. Yes, they will come, but just be a little more tidy. You worked hard for the 193 runs. Keep the pressure on. Yeah, sometimes it happens when you drop a catch early on of a batter like Haris. It affects other fielders. The motivation goes down, the heads go down, but it's too early for that. There's still 179 runs. But it's KP. They're never out of the game.
Gone for 4. Just beats that fielder. Outfield is rapid. Shot is good. Pitch is excellent. Absolutely, such a nice pitch. Have a look at that. Just threw his hand onto it. And the rest was done by the outfield. He just rushed it towards that boundary line. 2 back foot punches in the last over, and this time onto the front foot. This is a good start. There's a long on in place for Sahibzada Farhan and deep square leg. Interesting. KB sitting pretty at the top of the table. This is what they've done. Have a look at those results. 1 by 18, 1 by 2 runs, 6 wickets, 7 wickets, 27 runs. Let's see what they bring today. Wickets is what Amir Yamin is searching for. Again, a change in the field for Haris. They've kept that mid-wicket going because they know that he likes playing in that area. Again, a good over. Boundary in it, a wide, but yeah, they're dot balls, a single. 7.5 is the current run rate. And looking at their journey, he was just telling us they've got 3 and 2. 2 chasing, 3 batting first. So they've had a fair share of both sides. And this is their first appearance here in Multan. Let's see how they fare over here. They have been taken by surprise in terms of bowling. Let's see how it goes when they're chasing now. I see KP being a little too cautious at the moment. Haris 5 of 9. Sahibzada Farhan has looked good, but they've set a good field for Haris. They've got a deep mid-wicket in place and fine leg right at the boundary line. These are the 2 fielders outside the circle. Yeah, that's fine leg, and there's a fielder at mid-wicket because they know that they fancy this Haris fancies this area. Edge, and again through the hands. Once again the same fielder, Hunain. Same batsman, Haris. So if they return the favour of 2, Tayyib Tahir drops by dropping Haris twice. 3 gone, 22 for no loss. The pressure on the young lad making his debut for Central Punjab, big occasion. And you have dropped 2 catches inside 3 overs. And you're still to bowl. That won't help his confidence for sure. This one, again, a straightforward chance. Just went straight to him. Just pure pressure. Good thing is, immediately after the drop, Captain Qasim Akram has gone to him. He pats his back. He tells him it's all good. So this is fine. You need that for a youngster who's appearing for the first time. Give him the confidence. If he drops it for the 3rd time, then do what you want. But twice is okay. Yeah, somebody like Haris, 2 catches going down. I don't know. Seems like the plan for KP is to be careful, cautious in the first 3 or 4 overs and then look to launch, because we know that they've got a formidable middle order batters. That's the catch again.
He's been dropped twice, Haris, but keep in mind that it's also playing in the back of his mind that he's been dropped twice. He's not getting the shots the way he wants. So he's a touch fragile at the moment as well. Waqas has been so good. Now, he's not express fast, he's military medium, but his accuracy makes it difficult for the batters to put him away. They need more force in the shot. And his experience, of course, that counts a lot. He knows what the strengths and weaknesses are, because these guys play each other day in, day out. So it's a mental study that a bowler does against the batter that he's bowling at. What will he try to do? Where will he try to attack me? And because of that bowling from both ends, now the run rate has just come down to 6.6. So you know, as Central Punjab, they're looking for a boundary, an opportunity. There. Can you stop that? No, Sama Mir cannot bend enough. The ball's traveling. Now that is an excellent shot. Much needed boundary. Because pressure was just building up to these KP openers. Yep. Concentration, 100%. Just threw his hand onto it, and this is such a good pitch that you're not stopping those. And that outfield is lightning. Yeah, from that angle you come to know it was quite far away from Osama Mir. Another single. So getting a boundary and over. Central Punjab would be okay with that. In the power play, one boundary per over, that's fine. Up. Through the line, on the up, beautiful. Central Punjab, well, they would be hoping to get a wicket here. Because KP side, they've got a wonderful middle order batters, Kamran Ghulam, Adil Amin, Israrullah in the side also. Sarwar we saw has got potential. So if you go deep in this inning, Central Punjab might be in trouble then. See, what they're trying to do is just save those wickets, not to lose anything in the power play. And once you decide on that, then you need to be sure that you play long enough to cover up that required run rate. Still early days in the innings. Dropped was the first time, Haris, by Hunain. Dropped for the second time, Haris, by Hunain. He owes Hunain a nice dinner tonight. It's really good bowling. End of the over, 4 gone, 29 for no loss. First class. खैबर पख्तूनख्वा का आगाज ज्यादा तेज रफ्तार तो नहीं है, लेकिन विकेट कोई नहीं खोई। किस्मत ने जरूर साथ दिया हारिस का, 2 कैचेस छूटे, लेकिन पावर प्ले में अभी 2 ओवर्स बचे हैं और इसका अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों सेट बैटर्स। या हुनैन शाह, इनके मुतालिक बहुत कुछ सुना गया है कि हाल ही में बहुत तेज बॉलिंग करके आए हैं ये लाहौर में। दाएं हाथ से ये फास्ट बॉलिंग करते हैं और इन पर अब सारी नजरें होंगी। बल्ले को असद तेजी से इन्होंने हिट किया। ये नसीम शाह जो पाकिस्तान के स्टार क्रिकेटर हैं, स्टार फास्ट बॉलर, ये उनके छोटे भाई हैं।
काफ़ी क्लब क्रिकेट इनने खेली है। इनका पहला मैच है। हुनैन शाह, इनका जो बॉलिंग एक्शन और इनका रन अप, इनका खासा मिलता जुलता है अपने बड़े भाई से। दिलचस्पी से खाली नहीं होगा ये पैसेज ऑफ प्ले। काफ़ी उम्मीद थी और इंतज़ार था कि ये कब आएंगे सेंटर स्टेज पर, और बॉल हम आ गया है अब। और ड्राइव करने के लिए गए, ऑफ द विकेट, गेंद तेजी से निकली, बाल बचे। साहबजादा फरहान, उनको तवक्को नहीं थी कि ये पढ़ने के बाद छोड़ती हुई जाएगी। अच्छा कैरी भी हुआ। साहबजादा फरहान बिल्कुल खड़े खड़े खेल गए, लेकिन वो शायद इतनी मूवमेंट एक्सपेक्ट कर नहीं रहे थे, इतनी ज़्यादा मूवमेंट देखने में नहीं आई। अच्छा बॉल ने हिट किया विकेट कीपर के ग्लव्स को भी। अच्छी रफ्तार हासिल कर रहे हैं हुनैन। अभी हाल में इनकी जो ये अच्छा खेल दिया इस बार, बड़ी दलेरी के साथ स्ट्रोक खेला। लेग साइड में ज़्यादा बड़ा गैप नहीं था मिड ऑन और मिड विकेट के दरमियान, लेकिन साहबजादा फरहान आज बड़े दिलकश चौके लगा रहे हैं, पहले ऑफ साइड में और अब ऑन साइड में। अच्छी बैटिंग साहबजादा फरहान की। थोड़ा सा इनसाइड आए, हुनैन वही शेप ढूंढ रहे थे। बॉल थोड़ा सा मिडिल से स्टार्ट किया, लेकिन साहबजादा फरहान की जो मूवमेंट थी, उन्होंने इस चीज़ की इजाज़त दी उन्हें कि वो इसको ऑन साइड पर खेल सकें। अच्छा टाइम कर गए। बॉल सीधा था, ज़्यादा बुरा बॉल नहीं था, लेकिन अच्छी बैटिंग। अच्छी लेंथ पर फिर से गेंद को गिराया। साहबजादा फरहान ने, उनका स्ट्राइक रेट 141 है। अब तक 5 चौके वो लगा चुके हैं। ये देखिए बड़ा अच्छा स्मूथ रन अप है, लंबे लंबे डग भरते हुए पहुंचते हैं। गेंद की पकड़ जो है वो भी नसीम शाह की तरह की ही है। बिल्कुल रिस्ट जो है, कलाई बिल्कुल गेंद के पीछे है। इससे अच्छा स्विंग हासिल करने में जरूर मदद मिलेगी इन्हें। अभी हाल ही में कुछ फास्ट बॉलर्स की रफ्तार का अंदाज़ा लगाया गया था, वहाँ पर जो बॉलिंग मशीन है उसके ज़रिए, तो उनमें ये भी शामिल थे। 140 से ज़्यादा रफ्तार पर इन्होंने बॉलिंग की थी। हुनैन शाह ने नसीम शाह की तरह आउट स्विंग भी अच्छी करते हुए नजर आए, वही खूबी नसीम शाह की भी है। काफी लंबा रन अप है, बिल्कुल जो 30 गज का दायरा है उसके बाहर से शुरू करते हैं। रन अप स्मूथ है, आर्म्स की जो पंपिंग है वो भी बड़ी रिदमिकल है। बड़ी तेजी के साथ ये रन चीना कदे सुस्त रवि का उसामा ने मुजाहरा किया मिड ऑन पोजीशन पर। अच्छा ओवर रहा, अच्छा तासुर यहाँ पर छोड़ा है हुनैन शाह ने। 5 ओवर के बाद 35 पर कोई विकेट नहीं। मतलूबा रन औसत 10.6 है अब 5 ओवर्स के बाद। साहबजादा फरहान ने 25 रन बनाए हैं। इस वक्त ग्राउंड में मिनी कॉन्फ्रेंस हो रही है सेंट्रल पंजाब के खिलाड़ियों के दरमियान। नौजवान कासिम अकरम, ज़ाहिर है उन्हें मदद की ज़रूरत है। इस लेवल पे उनका इतना तजर्बा नहीं है और ये तो बहुत ही सीनियर खिलाड़ी उनके साथ खेल रहे हैं। शुएब मलिक, आमिर यामीन इस गुफ्तगू का हिस्सा हैं, और उसामा भी, जिनको गेंद दे दी गई है। पावर प्ले में स्पिन से अटैक करना चाहेंगे। इंपॉर्टेंट बॉलर हैं उसामा मीर, सेंट्रल पंजाब के उन चंद बॉलर्स में से जिन्होंने काफ़ी कंसिस्टेंटली ये टूर्नामेंट खेला है।
उनकी लाइन और लेंथ काफ़ी अच्छी रही है। बाज़ औक़ात ज़्यादा रन्स नहीं मिले उन्हें खेलने के लिए, लेकिन आज उनके पास रन्स हैं और आज उन्हें खुल खेलने का मौका मिल सकता है। सेंट्रल पंजाब ने पावर प्ले में ज़्यादातर अपने फिंगर स्पिनर्स से बॉलिंग कराई है। आज उसामा को ये चैलेंज दरपेश हुआ है, जिन्होंने 51 विकेटें हासिल की थी। कल के मैच में कोई विकेट हासिल नहीं कर सके थे, जिसका खासा नुकसान हुआ था सेंट्रल पंजाब को। लेकिन आज फ़र्क ये है कि ये 169 की बजाय 193 रन्स को डिफेंड कर रहे हैं, तो इससे बॉलर्स का दिल बड़ा हो जाता है जब स्कोर बोर्ड का इतना ज़्यादा दबाव ना हो। पहली गेंद पर यॉक करने की कोशिश की, रन हासिल किया हारिस से। ज़्यादा मुहतात रहना होगा उसामा को अपनी लाइन और लेंथ के लिए, क्योंकि ऑफ साइड पे पांचों फील्डर बिल्कुल दायरे के अंदर हैं। जरा सी शॉर्ट और वाइड बॉल जो है ऑफ स्टंप के बाहर मुश्किलात का सबब बन सकती है। इस विकेट पे काफ़ी टाइम मौजूद है बैटर्स के लिए। ऑन साइड पर मिड विकेट और लॉन्ग ऑन डीप में है, आसान नहीं होता स्पिनर्स के लिए पावर प्ले में बॉल करना। लेग साइड में इस गेंद को सरका दिया साहबजादा फरहान। आज बहुत ही उम्दा खेलते हुए नजर आए हैं ये इस टूर्नामेंट में। हालांकि अभी तक कोई बहुत बड़ी इनिंग्स इनकी तरफ से नजर नहीं आई, लेकिन 40 रन 35 रन ये मुसलसल बनाते हुए आ रहे हैं। और ये मिस फील्डिंग वकास मकसूद जो पहला आज मुकाबला उसमें हिस्सा ले रहे हैं, थोड़ा रस्मी नजर आए बॉलिंग के बाद। फील्डिंग में ये बाउंड्री नहीं होनी चाहिए थी। बॉल घूमती हुई उनके पास आ रही थी, बिल्कुल भी उसको जज नहीं कर सके और ऐसा लगा कि बॉल से आगे निकल गए, बॉल टांगों के बीच में से निकल गई। सेंट्रल पंजाब इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती, मैचेस हारते हुए आ रहे हैं, प्रेशर एकदम जल्दी आ जाता है। उसामा भी खुश नहीं हुए। मौका और अच्छा स्टंप किया। एक बार फिर यॉर्कर लेंथ पर गेंद को गिराया। हारिस बहुत जल्दी अपनी क्रीज छोड़कर आगे चले गए थे। जब उनने वापस पलटना चाहा तो अखलाक ने काम तमाम कर दिया था। टीवी अंपायर इस बात की तस्दीक भी किए देते हैं कुछ लम्हों में। हारिस का देखा गया है कि बहुत ज्यादा प्री मेडिटेटेड शॉट्स खेलते हैं। इस मरतबा भी फील्ड को भांपते हुए पहले ही निकल आया। उसामा ने बड़ी होशियारी से जो है बॉल वाइड कर दिया ऑफ स्टंप के बाहर, जहां उनके पास ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है। हारिस इस चीज की तवक्को नहीं कर रहे थे और देखते हैं कि थर्ड अंपायर क्या फैसला करते हैं। अच्छा ग्लव वर्क था अखलाक का भी। यहाँ खुद को यॉक करा लिया क्योंकि बहुत ज्यादा आगे चले गए थे और आखिर में गेंद से दूर रह गए। देखिए ये तो आउट यहां पर दे देना चाहिए था। यहाँ जो बेल्स हैं वो अब देख सकते हैं कि वो ग्रूव से निकल चुकी है और अभी ये खासा बाहर हैं मोहम्मद हारिस। 2 बार उनकी पार्टनरशिप हुई 80 से ज़ायद की साहबजादा फरहान के साथ, लेकिन आज उनको जल्दी जाना पड़ेगा। 15 गेंदों में 14 रन बनाकर चले। स्टंप किया अखलाक ने उसामा की गेंद पर। इसरारुल्लाह जो पिछला मैच माज खान की जगह पर खेले थे, आज माज खान आमिर अजमत की जगह पर टीम में शामिल हो गए। इसरारुल्लाह को टॉप ऑर्डर में जो उनकी असल पोजीशन है वहाँ आज खिलाया जा रहा है। शायद इस गरज से भी कि वो बाएं हाथ का बैट्समैन नहीं था। इनके सारे ही बैटिंग ऑर्डर में जितने भी स्पेशलिस्ट बैट्समैन हैं उनमें से कोई भी ऐसा नहीं था, तो वो जो दाएं बाएं हाथ की पार्टनरशिप है वो ज़रूरी ख्याल कर रही है खैबर पख्तूनख्वा की टीम मुल्तान पहुंचकर।
काफ़ी अरसे से सीन पे हैं। और तारिक, एक चीज़ नोट की है कि जो खिलाड़ी गुज़श्ता 4-5 साल या उससे ज़्यादा से खेल रहे हैं, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो 120 से कम है। लेकिन जो नए खिलाड़ी आ रहे हैं, जिनके 15-20 मैचेस हुए हैं, उनका कम से कम स्ट्राइक रेट भी 125 से 130 के आसपास है। ये वो चेंज है जो क्रिकेट में गुज़श्ता 2-3 साल के अंदर आ गई है। टॉप ऑर्डर बैटर्स, बल्कि T20 फॉर्मेट में आपका जो पूरा बैटिंग लाइनअप है, उनकी स्ट्राइक रेट में काफ़ी इजाफा हुआ है। बिल्कुल हमारे नज़रों के सामने जो है ये T20 की बैटिंग इवॉल्व हुई है गुज़श्ता चंद बरस में। स्लिप लाई गई है और ऑफ साइड में कासिम अकरम पॉइंट पर चले गए हैं। लेग साइड में मिड विकेट पर एक खिलाड़ी को बाउंड्री पर भेजा गया है, मोहम्मद फैजान को, और अली असफंद को थर्ड मैन से स्क्वायर लेग की तरफ लाया जा रहा है। तो उसामा मीर लेग स्पिनर हैं, सिर्फ 4 ही फील्डर हैं लेग साइड में इस वक्त लेफ्ट हैंडर के लिए। ये देखिए, पहले ही निकल आए थे और अच्छी अक्लमंदी से बॉल की, उतनी ही अच्छी कीपिंग अखलाक की। गेंद को उन्होंने दोनों हाथों में थामा, लेकिन विकेटों के ज्यादा करीब थे, इसलिए बाएं हाथ से बेल जुड़ाई। इस बार उठाकर खेला, लेकिन पहले गिर गई ये मलिक से और ओवर रन कर दिया उन्होंने। एक ही रन आखिर में हासिल कर सके। हुगली थी, खुशकिस्मत रहे, मलिक जज नहीं कर सके बॉल की फ्लाइट को। कम ऐसा होता है, वो जज ना कर सके। पावर प्ले के इख्तिताम पर खैबर पख्तूनख्वा 42 पर 1। खैबर पख्तूनख्वा का ये सबसे कम स्कोर है पावर प्ले में। लेकिन इस टीम में इतनी डेप्थ मौजूद है कि किसी भी वक्त इसकी तलाफी कर सकती है। आमतौर पर ये कैचअप क्रिकेट इतना खेलने पर यकीन रखते नहीं है, ये स्कोर बोर्ड को मुसलसल मुतहर्रिक रखते हैं, बिल्कुल जो टीम की ज़रूरत होती है उसके मुताबिक। हुनैन शाह, ये भी एक बड़ी वजह है पावर प्ले में रन ना बनने की। यहाँ अच्छा मुकाबला इनका होना चाहिए, हुनैन शाह की पेस का, फरहान और इसरारुल्लाह के साथ। तो ये पावर प्ले जो है बड़ी हद तक ये साहबजादा फरहान के नाम रहा। उन्होंने इसमें 5 चौके लगाए, कैच गिरा और बावजूद बाउंड्रीज जो हैं वो आती चली गई। साहबजादा फरहान ने ऑन द अप भी बहुत ही उम्दा शॉट खेले, उनके कवर ड्राइव्स काबिल दीद थे। ये अच्छा स्टंप किया मोहम्मद अखलाक ने। हवा में ज्यादा दूर नहीं थी पॉइंट पर कासिम अकरम, जिन्होंने अच्छी कोशिश की। बॉल बल्ले को आके लग रहा है, जिसे क्रिकेटिंग टर्म्स में कहते हैं, बजाय इसके कि बल्ला बॉल को जाकर लगे। ये हुनैन की पेस है, थोड़ा सा बाउंस भी हासिल कर रहे हैं। फरहान कंट्रोल बिल्कुल भी नहीं कर सके, खुशकिस्मत रहे, फील्डर की पहुंच से दूर थी। यहाँ साहबजादा फरहान ऑन द अप शॉट खेल रहे थे। बाकी जो 2 सेंटर पंजाब के पेसर से आमिर यामीन, वो खास तौर पर उन्होंने अच्छे कवर ड्राइव्स किए, लेकिन यहाँ उनको मुश्किल पेश आ रही है वही शॉट खेलते हुए पेस की वजह से। ये बहुत अच्छा मिडल किया, लेकिन प्लेस नहीं कर सके। थोड़ा सा वक्त लग रहा है साहबजादा फरहान को हुनैन की पेस से हम आहंग होने के लिए। इस विकेट पे पेस जो है बैटर्स के फायदे की चीज़ है, क्योंकि अच्छी टाइमिंग हासिल कर सकते हैं। अब्दुल रज़ाक आज बाहर से और ज़्यादा मुतहर्रिक लगते हैं। 1-2 बार
फील्डिंग उन्होंने तब्दील भी कराई है उठ के। और उठाकर खेला और निकल जाएगी गेंद, क्योंकि इस इलाके में ये बड़ी तेज से ट्रेवल करती है। मिड ऑफ की पहुंच में बिल्कुल नहीं थी। मतलब फिर कंट्रोल में नहीं थे साहबजादा फरहान, किस्मत ने साथ दिया। फिर फील्डर की पहुंच से दूर, ये देखिए फिर उनका बॉटम हैंड जो है वो छूट गया था। एक ही हाथ से शॉट खेल गए, और अगर तैयब ताहिर इस गेंद को नहीं पकड़ सकते तो कोई भी नहीं पकड़ सकता। काफी तेज हैं लेकिन आउटफील्ड उनसे भी ज्यादा तेज। अच्छी बॉलिंग की है हुनैन ने, अच्छा इंप्रेशन छोड़ा है अभी तक। सिर्फ 16 साल इनकी उम्र है, टेम्परामेंट की भी दाद देनी होगी, बड़ी स्टेज है उनके लिए। जहां अच्छी लेंथ और लाइन को उनने अपनाया हुआ है। पावर प्ले में भी एक ओवर उनका खासा मुतासिर कुन था। फिर उठाकर खेला साहबजादा फरहान, ज्यादा एतमाद का मुजाहरा कर नहीं पा रहे उनकी पेस के सामने। नेशनल T20 कप किंगडम वैली से मंसूब है। इस साल आप भी जा सकते हैं किंगडम वैली प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल फेसबुक पेज पर और इनामात पा सकते हैं। अगले विनर आप भी हो सकते हैं। अच्छा ओवर फिनिश करना होगा हुनैन को, अभी तक अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने। सेंट्रल पंजाब को जो कमी थी फास्ट बॉलर्स की, आउटराइट पेस कम थी। इस टीम में यहाँ तेजी के साथ रन हासिल किया जाएगा तो शायद इस साल कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में ये इनके ज़्यादा काम आ सकते हैं। हसनैन शाह पिछले कई बरसों से हम देख रहे हैं सेंट्रल पंजाब के पास रफ्तार की कमी रही है, उसका उनको नुकसान भी हुआ, खासतौर पर पिछले साल 51 पर 1। आमिर यमीन ने 2 ओवर्स में 18 रन दिए। वकास मकसूद ने भी 2 ओवर्स किए। हुनैन शाह जो हैं उन दोनों से तेज़ लगे हैं। उसामा मीर जो हैं उनको अपनी बॉलिंग जारी रखना है। पहली ओवर में विकेट दिलाई, अच्छा कॉम्बिनेशन है राइट आर्म फास्ट बॉलर का लेग स्पिनर के साथ। इस वक्त 5 फील्डर ऑफ साइड पर हैं, ज्यादा लाइन ऑफ अटैक ऑफ स्टंप के बाहर रखना चाहेंगे उसामा। और उसको यहाँ फील्डर्स की मदद जरूर चाहिए होगी। इस विकेट में ज्यादा कुछ है नहीं फील्डर्स बॉलर्स के लिए, ज्यादा जान मारनी होगी फील्डर्स को, चाहे वो ग्राउंड फील्डिंग हो चाहे वो कैचिंग हो। एक्स्ट्रा कवर टोपर्स खेलना चाहते थे रूम बनाकर, लेकिन उसामा ने अच्छा रीड किया। ये कमबैक सीजन कहा जा सकता है उसामा मीर के लिए। मुसलसल अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं। एक ऐसी टीम में थे जो कि अपने मैचेस हारती हुई आ रही थी, लेकिन ये किसी मैच में नहीं आ रहे हैं। अगर विकेट नहीं मिली तो रन्स कम दिए हैं। एक बार फिर ज़्यादा एतमाद का मुजाहरा बैट्समैन नहीं कर सके। 3 फील्डर माइल हुए तो बुरा नहीं मना रहे अभी तक इस्रारुल्लाह की मौजूदगी का। सेंट्रल पंजाब के बॉलर्स जिस तरह से उनको भेजा गया वन डाउन पोजीशन पर, क्योंकि रन बनाने की दरकार औसत है अब वो 11 से आगे चली गई है। ये अच्छा स्पेल है सेंट्रल पंजाब के लिए। विकेट गिरने के बाद हुनैन ने अच्छा ओवर किया और उसामा ने भी कंट्रोल में रखा हुआ है। जब तक बाउंड्रीज कंसीड नहीं करेंगे सेंट्रल पंजाब ज्यादा माइंड नहीं करेगा। यहाँ और ज्यादा इंतजार ये कर नहीं सकते हैं। ये लेग बाइक करार पाएगी क्योंकि पहली बार इस कदर दबाव का सामना है खैबर पख्तूनख्वा को।
आज 194 रन उनकी बॉलिंग के खिलाफ बने और कुछ परेशानियां हैं अब्दुल रहमान को। अब तक ये टीम नाकाबिल शिकस्त चली आई है। और ये अच्छा शॉट खेला, रिलीज शॉट, इस बार सामने हिट लगा दी छक्के के लिए और जमूद को तोड़ने में कामयाब हुए साहबजादा। जरूरत थी इस बड़ी हिट की। उसामा थोड़ा सा अपने लेंथ में चुके ज्यादा आगे बॉल कर गए और साहबजादा फरहान बिल्कुल तैयार थे। फील्डर के सर के ऊपर से गई, लेकिन मॉडर्न डे बैटर्स आजकल स्वीपर्स को खातिर में नहीं लाते। जब वो इस चीज का इरादा कर लें कि उन्होंने छक्का मारना है तो बेशक फील्डर हो वहां पर वो इस यकीन के साथ खेलते हैं कि वो उन्हें क्लियर कर लेंगे और ऐसा ही हुआ। बढ़ते हुए रन रेट में इस शॉट की अशद जरूरत थी। उसामा का रिस्पांस देखने वाला होगा। अब फील्ड में तब्दीली कर दी है, अब सिर्फ 4 फील्डर ऑन साइड पर हैं। लाइन ऑफ अटैक क्या होगा अब? अच्छा पुल शॉट, गेंद चली है गैप में और दोनों फील्डर्स दौड़े दौड़े आए, लेकिन गेंद तेज सर थी। बड़ी अच्छी बैटिंग साहबजादा फरहान जो 26 गेंदों में 44 रन बना चुके हैं। उनने महाज को गरमाया हुआ है, मजबूर किया इस बार उसामा को कि उन्हें लेंथ दें और उसी का फायदा मिला। Picking up on that run rate, KP, and that's their head coach Abdul Rahman. 66 for 1, 8 overs. So the run rate now just climbed a little ahead of 8 and over. That's the current run rate. They've had 2 good overs, previous one getting them a 6 and a boundary. 15 of that. Get tidy, Central Punjab. Ali Aspan is the new bowler. Marina, he is the first ever pick of Pakistan Junior League. His name goes into history. Got picked up in the elite category. And as PJL goes on for coming years, he will be remembered as the first ever player to be picked. Gets that edge. The boundary is important. Doesn't matter how it comes, because they are now trying to catch up on that required run rate of 10.4. Well, they have to go big. Just try to get every boundary possible. Alias Fund was just a floater outside off stump, allowed him to have a wild swing. Not a convincing one, but runs matter. Bowler shouldn't be worried. He'll get his opportunity. If they play like this, there'll be a moment where the batsman might just lose his concentration. That's a flat, quick throw coming from the deep. Good running to follow up a boundary. Well, yes, opportunities have been provided. But Central Punjab, they need to be spotless in terms of fielding. Shoaib Malik with the throw. Flying over his head, the baller's head. They'll keep pushing hard, and that's where they might open up some chances for CP to avail. Oh yes, told you when they're going to take chances, you'll get your opportunities. Bowler shouldn't worry too much about it. And Israrullah was trying to go big in this over, and the second stumping now in the match for Central Punjab. Out of the blocks very quickly and away from the ball. It kept going outside his comfort zone. It was nowhere near. Long way down, of no point of return. Good one to bag, Central Punjab. Israrullah goes on 12, 72 for 2 KP.
Kamran Ghulam, the new batter in after the dismissal of Israrullah. Israr was promoted in the order to go for those big hits. And didn't really work out for them. 12 of 10 for Israr. And now Kamran Ghulam is a prolific scorer for KP. Bats usually at number 3, today at 4. Ali straight away amongst wickets in his first 3 balls of his spell. We said it before, once again, his action reminds you of Zulfikar Babar. He bowled it wide, saw him coming down. Good work by Akhlaq there, second time. The boy is brave. He's not shy to toss it up. It's good bowling, sensible bowling. Just the angle was always going to travel away. Chance, chance. Kamran Ghulam, that's what pressure can do. Great first over, 6 and a wicket, 72 for 2. It's not an easy task for KP. 2 down. The score isn't the problem. The dot balls, that might be concerning. That's what they need to avoid. Kamran Ghulam hasn't opened up his account. Just rotate the strike, get Farhan back. Pick a boundary option in every over. And rotation of strike, that's important. Whenever there are dot balls, we've seen it resulted in rash shots, and the batters had to take walk back. Is it Faizan's day? He was superb with the bat. If he can do half of that with the ball, he'll be my player of the match. Him and Tayyib Tahir. Loud call from Kamran Ghulam to send his partner back. It was halfway down and then a very loud call. They can't afford to run out. Kamran Ghulam is a very handy and busy cricketer at crease. He'll always take on the chance to dominate. Farhan is well settled in now. Bowling has been decent from Central Punjab, but they need to pull up their socks in the field. No more drop chances, some lousy attempts. The field is in the deep, they need to cut down those doubles. They have to create that pressure for KP and maintain it till the end. That's the only way they can defend it. After this ball, we take wicket 7-6 and that 4-6. Can you hear me now? No, you can't. Marina, take us through Faizan's batting. 7 sixes in that knock of 70 plus. He was showing no mercy. Very brilliant in his approach. He was steady at the crease. He never shied away to go big over the boundaries. Those jabs coming in hard. And he did mention he practiced those big hits, but it's more about the approach. He was clear in his mindset. That was the difference. Check.
It's the DICC T20 Champions Trophy 2022 in UAE. It's a platform for showcasing all the talent the deaf cricketers have on this planet. Slog, but will be safe. Will go on the bounce to the fielder there. The comparison after 10 overs, Central Punjab 195 for 1. Khyber Pakhtunkhwa slightly behind 77, lost 2 wickets. But they wouldn't worry about it. They've got ample batting to follow. Adil Amin got Sarbar Afridi. He has that tendency to play impactful innings like Fazan, Khalid Usman as well. Oh, that's a very good shot. That's got to be out. Yes, it is. It straightened up. It had to be out. The umpire took a while, but then ruled it in the favor of the youngster. Sahibzada Farhan is out. Second one for Ali Asfand. On the first delivery, that was a very casual shot from Farhan. He's trying to work it into the onside. And he was trapped straight away. No worries there. The finger goes up. Central Punjab tightening the screws around KP. Well settled batter goes. Sahibzada for 47. 77 for 3 KP. Adil Amin, the new batsman in. The departure of Sahibzada Farhan, got 47 of 31. He was going good. But the youngster, he's got a wicket in his first over, and straight away the first ball of his second over, he gets another one. No wonder he's the first pick of PJL. 77 for 3 now. KP breathing heavily. The leg stick, please. The gutsy bowler. He knows he's against the top side in the tournament, but he's keeping himself to basics, and that's getting him results. Here he is, Ali Asfand. He's tossing it up really nicely in the perfect areas to ask questions. I don't know what Sahibzada Farhan was doing. He knew straight away. He shuffled across, and then a very late attempt to play that shot, that too with the angle bat. Always in trouble. Just 3 shy of his 50. KP now needs exactly 12 runs and over from here on. And the good thing for CP is both the batters are new at the crease. As you mentioned, they need to just stay to the basics. Bowl within the stumps, field well, that's all they need to do. Just focus on the dot balls. $114 of 56. It's all gettable, but again,
As I said, CP needs to just keep things tidy. That keeps the pressure on. Wickets will come. Wickets will come. This is the first time I see KP is being tested out there. Brilliant over so far. Score coming off it. 1 wicket, 1 delivery to go. Singles aren't going to hurt Central Punjab. He's down the wicket. Well earned boundary. Played it wide of that fielder at long off. And that brings the end of 11 overs. 85 for 3. The difference between the two sides, Marina, Khyber Pakhtunkhwa 85 for 3 at the same stage. CP were 102 for 3. They're still 17 ahead. At the 10 over mark, they were 18 ahead. At the 6 over power play mark, they were 8 ahead. So that gap is being increased because the wickets are falling. So now the required is 12.11. Current is 7.7, but that can change. 2 good overs. Faizan in operation. KP right now is just in a rebuilding form. This is the delivery. Excellent use of feet by Adil Amin. It's coming down the track with the spin. No problem there when you can reach the pitch of the delivery. A glorious shot over the infield. They're always going to be under the pump, KP. Will try to target something, some bowler. Adil and Kamran Ghulam, both very busy players. They're not going to give up. That's one of the attributes of KP as a team. They have to just make sure they don't fall behind. With the gap they won't be able to cover. That's the only concern. Long on, long off. Mid wicket. Deep fine leg. Deep cover. That's a bad ball. It deserves that punishment. Again, you've got to be tidy. Things will be okay. Got to be tidy. The idea was right, but not the execution. Just trying to dip in a Yorker. Not a good effort from Abbas Maqsood. Could have stopped that. That's the sort of fielding you would demand from your fielders out when you're defending a total. We'll see when he comes to ball, Abbas Maqsood, how he feels about it. He needs the ball himself. Pushing hard for 2. Lot of running in. That's very well done by the fielder from the deep. Rushed in and saved that extra single. Tayyib Tahir was the fielder. He's one strong character. Tayyib Tahir announced himself with the bat. Always have to keep an eye on that bat pace and as well as the speed when you're the boundary riders. Well done by Akhlaq. Today everyone's putting in their effort. Kamran Ghulam has been their mainstay, but it's just that he hasn't really had those big knocks. 39, a good start. 57, that's a good start. In fact, I'll call him good innings in T20s. 30 plus is a 50. Slog, catch it is the call. Kamran Ghulam goes and Irfan Niazi takes the catch. The pressure was calling for it. They weren't getting the boundaries going and Faizan gets his first. You jinxed it, Sikandar.
Kamran Ghulam, yeah, they heavily rely on him. But this time, it's just that he enforced that shot. It wasn't there, the length wasn't there. Too full to get underneath and straightforward catch. Faizan, he's got his first success as bowler. Central Punjab are now rolling over KP. Gone for 5, Kamran Ghulam, 91 for 4 KP. Mohammad Sarwar is the new batter after the departure of Kamran Ghulam. One leaves, the other one comes. They're all good with the bat. They all know what's required and they can still get there. Trust me. This can change in a span of 2 overs if they can target a bowler, a particular bowler that they choose. At the moment, Asman is bowling so well, youngster. Faizan's got a wicket in his first over. Second over rather. One to come. Waqas has bowled a good spell. And they kept things tidy. If you look at the extras, they're just 2. 1 wide and 1 leg by. So they're a different Central Punjab today. That's an excellent over. 7 off it and a wicket. 12 gone. It's 92 for 4 KP. बहुत ही मुश्किल सूरत हाल का इस वक्त सामना है सरवर आफरीदी और आदिल अमीन ख़ास तौर पर मैच विनर अभी भी हैं केपी के पास बैटिंग में, लेकिन पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता ये सर से ऊंचा होने लगा है। और आज किसी भी गेंद पर मुतासिर किए बगैर रहे नहीं अब तक हुनैन शाह अपनी रफ्तार से। और ये कामरान गुलाम क्योंकि रन रेट बढ़ती जा रही थी तो उन्होंने बड़ा शॉट खेलने की कोशिश दी। न्याजी ने सेंट्रल पंजाब के लिए आउटफील्ड में हमेशा ये उम्मीद बने रहते हैं, सबसे अच्छे फील्डर हैं आउटफील्ड में सेंट्रल पंजाब के। देखें दाद देनी होगी यहाँ पे सेंट्रल पंजाब को, जिस तरीके से ये मैच खेले हैं वो पहले बॉल से लेके अभी तक प्लानिंग बहुत शानदार रही, प्लेइंग 11 की सिलेक्शन बहुत कमाल की रही, एग्जीक्यूशन बहुत कमाल की रही। ऑल्दो तो 1-2 चांसेस मिले जिससे 30 रन एक्स्ट्रा ज़रूर किए उन्होंने, लेकिन दाद देनी होगी। एक डेस्परेशन थी आज कि अगर आज ये मैच नहीं जीतेंगे तो इस टूर्नामेंट से शायद बाहर हो जाते। और एक बड़ी साइड केपी के अगेंस्ट जिस तरीके से ये खेले हैं ये बहुत कमाल की बात है। काफी इंप्रेस किया है हुनैन शाह ने, अच्छी लेंथ पे बॉल करते हैं, पेस भी कमाल की है। नसीम शाह के छोटे भाई हैं, काफी स्मूथ एक्शन है और जिस तरह की लेंथ पे ये बॉल करते हैं ये सबसे इंप्रेसिव बात है इनकी बॉलिंग में। कोई मौका नहीं है केपी के बैटर्स को, कोई आसान बॉल नहीं मिला है कि वो हिट मार सके। और बैट्समैन को रीड भी किया। आदिल अमीन को ये जान चुके थे कि वो हिट करने के लिए जाएंगे और खासी हद तक जो नज़र थी इनकी वो आदिल अमीन के पैरों पर थी।
T20 का ऐसा खेल है, बॉलर की नज़र बैट्समैन के पैरों पे ही रहनी चाहिए, उसके बाद आप अपनी लेंथ में रद्दोबदल कर सकते हैं। एक और शानदार बाउंसर, कमाल बॉलिंग की है अब तक नौजवान हुनैन ने। हालांकि विकेट खासी सुस्त है, आज हमने किसी और बॉलर को अब तक बाउंसर करते हुए ज्यादा देखा नहीं। या काश हम इनको रावलपिंडी वाली पिचेस पे देख सकते हैं जहां पे एक्स्ट्रा बाउंस और पेस था, लेकिन जैसे आपने कहा कि थोड़ी स्लो पिच है रावलपिंडी के हिसाब से, तो इस पिच पे ऐसे बॉल करना, इसका मतलब है कि आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत जान मौजूद है। यहाँ पे सेंट्रल पंजाब की जो गिरफ्त है इस मैच में बहुत मजबूत हो गई है, और अगर आप नंबर्स पे जाएंगे तो 101 रन 44 बॉलों पे, तो हमेशा बॉलिंग साइड को ही चूज करेंगे। एक थ्योरी ये है T20 में कि ये इस तरह की क्रिकेट है, यहाँ गेंद जितनी तेज आती है उतनी तेज जाती है, लेकिन हमने देख लिया है अभी शारजा में और दुबई में कि रफ्तार का कोई नेमोल बदल नहीं, कोई भी फॉर्मेट हो। जो पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो हमेशा पेस के साथ चोली दामन का साथ रहा है पाकिस्तानियों का, और वो आज भी है। अब 43 गेंदों में 100 रन की ज़रूरत है और इनकी रफ्तार बढ़ती जाएगी जूं जूं और ज़्यादा मजबूत होंगे। अभी किसी कदर दुबले हैं। यार सबसे अच्छी बात है कि 2 कैचेस ड्रॉप किए थे इनिंग के आगाज में, उस चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया है। अक्सर हम देखते हैं यंगस्टर अगर शुरू में गलती कर बैठते हैं तो उसका असर बॉलिंग पे आता है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और बहुत कमाल का कमबैक किया है। और यहाँ पे ऐसा लगता है कि सेंट्रल के लिए ये ऐसी चेंज साबित होंगे जो शायद उनके दिन बदल सके। कासिम अकरम को भी इसमें शाबाश मिलनी चाहिए, जब जब कैच ड्रॉप हुआ वो इनके पास गए, इन्हें पुरसा दिया। देखिए 2 बैक टू बैक बाउंसर्स और उसके बाद यॉर्कर, तो गुण हैं इनके पास, और आने वाले दिनों में इनके बारे में सब और ज्यादा सुन सकेंगे। वेल बोल्ड हुनैन 96 पर जात। मुल्तान खासा गर्म है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा की इस इनिंग्स में बहुत ज़्यादा गर्मा गर्मी नज़र नहीं आई। साहबजादा फरहान ने ज़रूर 47 रन बनाए, लेकिन वो भी एक मुज़ाहमत नज़र आ रही थी एक ही एंड से। दूसरे एंड पर आप देख सकते हैं कि जो स्ट्राइक रेट है वो इतना को काबिल दीद या पुरकशिश है नहीं, जिसकी वजह से आज ये टीम पीछे है इस मुकाबले में। जी ऐसा लगा जैसे केपी के बैटर्स बहुत ज़्यादा एहतियात कर रहे थे सर्कल में। जब आप 190 प्लस रन चेज करने होते हैं तो आपको पहले बॉल से अटैक करना होता है, और जैसा आगाज़ हारिस ने किया, सब स्ट्रगल कर रहे थे, शायद फॉर्म वापस लेने की कोशिश की, 2 चांसेस भी मिले, लेकिन उस तरीके से आप उसको कंटिन्यू नहीं रख सके। दाद देनी होगी जिस तरीके की कप्तानी कासिम ने की, बॉलिंग एक शानदार रही। विकेट टू विकेट अब बॉलिंग करना होगी। अच्छे यॉर्कर करते हैं डेथ ओवर्स में आकर, ये हम पहले भी देख चुके हैं कई बार वकास मकसूद को, और ये पिच आइडियल है इस तरह की सूरत हाल के लिए, क्योंकि बल्ला नीचे लाकर इस बड़े ग्राउंड क्लियर करना इतना आसान है नहीं। जहाँ दाद देनी होगी इनको भी, क्योंकि सर्कल में बॉलिंग कर रहे थे, 2 ओवर्स में सिर्फ 11 रन दिए, तो इनकी वजह से जो प्रेशर बिल्डअप हुआ उसके बाद विकेटें गिरती चली गई। एक रन बन सकेगा, और आदिल अमीन ने सिंध के खिलाफ एक ऐसा ही मैच जितवा दिया था, इन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की थी, उसमें बाकी खिलाड़ियों ने भी इनका किसी कदर साथ दिया था, लेकिन वो पिच मुख्तलिफ थी, वहाँ गेंद बेहतर बल्ले पर आ रही थी। यहाँ देखिए वो इतनी अच्छी आवाज़ आ नहीं रही जब गेंद बैट से टकराती है। यार शायद यहाँ पे सेंट्रल पंजाब की इंटेंसिटी भी बहुत डिफरेंट है, क्योंकि डेस्परेट हैं जीतने के लिए, इस टूर्नामेंट में रहने के लिए। आप देख सकते हैं जिस तरीके से कप्तानी की है कासिम अकरम ने, और बहुत हेल्प मिली है शोएब मलिक से, रजाक से, बाहर से। गेंद लगी है ग्लव को और कॉल करने की कोशिश कर रहे हैं अंपायर इमरान को, लेकिन शायद
पैड पर। अंपायर राशिद का ये कहना है कि गेंद पैड से लगती हुई गई थी। हमने अक्सर देखा है कि ऐसे अपील्स हैं भी मुश्किल हो जाती हैं, लेकिन शायद राशिद यही सजेस्ट करें कि सिर्फ पैड से बॉल लगाए, लेकिन हम बेहतर पोजीशन में होंगे, एक्शन रिप्ले पे बता सकेंगे शायद। ये पैड से ये अच्छा डिसीजन यहाँ पे राशिद रियाज की जानिब से। राशिद रियाज खुद भी अच्छी खासी क्रिकेट खेले हुए हैं। ये इमरान रियाज जो इनके साथी अंपायर हैं, इनके साथ तो इन्होंने बहुत फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली। और ये मौका था, थोड़ा सा लेट रिएक्ट किया उसामा ने और गेंद तक पहुंच भी नहीं सके। लंबे कद के फील्डर हैं, नीचे आने में वक्त लगा। जहाँ कोशिश अच्छी थी, लेकिन जैसे वो सजेस्ट करें कि टिप हो रहा था बॉल उनके ऊपर, लेकिन सर्कल से आ रहे हैं, इनको बेहतर तरीके से एडजस्ट करना चाहिए था। बॉल परे की तरफ जा रहा था, तो एडजस्ट अगर करते बॉल की तरफ आते तो शायद बेहतर रिजल्ट हो सकता था इसका। और ये दूसरा कैच जो वकास की बॉल पे ड्रॉप हुआ है, अनलकी रहे हैं। ये बहुत चालाकी वाली बॉलिंग है और यही आप एक्सपेक्ट करते हैं वकास मकसूद से। ज़्यादा पेस नहीं है, लेकिन वेरिएशन बहुत है, स्लोअर बॉल बहुत अच्छा करते हैं। इस बार भी उन्होंने पेस कम की, और किसने सोचा था कि जो सेंट्रल पंजाब की टीम इतना स्ट्रगल कर रही है इस टूर्नामेंट में, और टूर्नामेंट के टेबल टॉपर्स को इस तरीके से आगे लगा लेंगे। और ये भी किसने सोचा था कि जो खैबर पख्तूनख्वा की टीम है वो आमिर अजमत जैसे हिटर को वो आज बेंच पे बिठा देगी और आप इसरारुल्लाह को खिलाने पे मुस्तिर होंगे, जो कि T20 में इतना मुतासिर करते नजर नहीं आ रहे। या सिर्फ जो वाहिद वजह जो मुझे नजर आती है वो उनका लेफ्ट हैंड बैटर है, उनकी साइड में लेफ्ट हैंड बैटर हमें ज्यादा नजर नहीं आते हैं, तो शायद वो वैरायटी रखनी हो उनको मिडिल ऑर्डर में। इस बार जोरदार अंदाज से खेला और खासा बड़ा गैप था स्क्वायर के सामने। 4 रन्स। हार्ड हिटर हैं क्रिकेट बॉल के सरवर आफरीदी, उन्हें 14वें ओवर का इख्तिताम चौके पर किया। अच्छा पुल शॉट। जहाँ ध्यान करना होगा, क्योंकि अगर सरवर आफरीदी के बल्ले में बॉल लगना शुरू हो गया तो ये रन्स काफ़ी नहीं होंगे। हमने देखा है कि इन्होंने बहुत शानदार इनिंग्स खेली हैं पहले, 103 पे 4 14 के बाद। इक्यानवे रन्स दरकार हैं खैबर पख्तूनख्वा को ये मैच जीतने के लिए। 6 ओवर्स बाकी आना बाकी हैं, और अगर आप इस स्टेज की बात करें तो 130 रन्स बना लिए थे सेंट्रल पंजाब ने, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा भी सिर्फ 103 रन पे हैं। शायद वो जो कैच तैयब ताहिर का ड्रॉप हुआ साहबजादा फरहान से, वो एक डिफाइनिंग मोमेंट हम कह सकते हैं इस गेम में होगा, क्योंकि उसके बाद जिस तरीके से तैयब ताहिर ने बैटिंग की वो शानदार रही। बहुत लंबे छक्के मारे, उसके बाद 72 रन की इनिंग खेली, बहुत ही कमाल। और शायद उसके बाद केपी इस मैच में बहुत पीछे रह गए थे। दोनों ही मैचों में तैयब ताहिर ने खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ तने तनहा बैटिंग का बोझ उठाया। ये वाइड हो जाएगी, और दोनों ही बार ऐसा लगा कि जैसे वो किसी मुख्तलिफ पिच पर बैटिंग करते रहे हों। 4 रन हासिल किए थे सरवर ने आखिरी बॉल पे, बहुत जोरदार शॉट था। उस तरीके से टाइम तो नहीं हुआ था, क्योंकि टाइम हुआ तो शायद ये बाउंड्री लाइन के पार चला जाता, लेकिन प्लेसमेंट अच्छी थी, दोनों फील्डर्स के दरमियान में बॉल गया और 4 रन हासिल किए। ये पार्टनरशिप सबसे जरूरी है केपी के लिए। इस बार हवा में शॉट खेला है और फील्डर कैच ले लेंगे आसानी के साथ। और तैयब ताहिर जो आज बैटिंग हीरो थे, फील्डिंग में भी वो किसी से कम नहीं, और ये बड़ी उम्मीद थे आदिल अमीन, ये नामुमकिन को मुमकिन करने की अहलियत रखते थे, लेकिन आज नहीं। यह शानदार कैच। तैयब ताहिर का शुमार पाकिस्तान के बेहतरीन फील्डर्स में से होता है, बहुत ही अच्छी पोजीशन में, बैलेंस बहुत कमाल का, आइज ऑन द बॉल, कमाल तरीके से कैच पकड़ा।
आदिल अमीन 14 रन बना सके, बड़ी विकेट हासिल की। 104 पर 5 खैबर पख्तूनख्वा। कप्तान खालिद उस्मान क्या कर सकते हैं यहाँ से, सवाल ये है, क्योंकि 90 रन 35 बॉलें, बहुत लंबा टारगेट है, बहुत बड़ा टारगेट है। 439 रन बनाए अपने करियर में, स्ट्राइक रेट 124 की है, 38 रन इनका बेस्ट है। इससे बेहतर करना होगा और तेज करना होगा, और अगर ये मैच केपी को जीतना है। लेकिन इंटेंसिटी कमाल की रही है आज सेंट्रल के बॉयज की जानिब से। एक और ऊंचा शॉट खेला, एक बार फिर तैयब ताहिर इसकी राह रोक लेंगे। अच्छा टीम वर्क देखने में आया। कासिम अकरम जो पॉइंट से गए थे पीछे तक, वहां से रिले थ्रो पहुंचा। स्क्वायर ऑफ द विकेट जो बाउंड्रीज हैं वो बहुत लंबी बाउंड्रीज हैं, उनको क्लियर करना इतना आसान नहीं है। लेकिन आदिल अमीन को जाना था, बड़ी हिट मारनी थी, तो बॉल अगर मुंह में गिरा हुआ है और उससे सोने पे सुहागा के सबसे ही सेफ फील्डर का इंतखाब किया उन्होंने। ये लंबी बाउंड्रीज इसलिए हैं कि इस साल जो वर्ल्ड कप है T20 का वो ऑस्ट्रेलिया में हो रहा है, वहां पर ऐसी लंबी बाउंड्रीज होंगी। और अच्छा पुल शॉट लगाया, फील्डर जो हैं काफी उन्हें दौड़ना पड़ा। फील्डर्स का भी इम्तहान है इन बड़ी बाउंड्रीज पर। सरवर आफरीदी कोशिश अभी भी अपनी जारी रखे हुए हैं, देखिए आप गेंद पीछे गिरा नहीं सकते, इस पिच पर वक्त मिल जाता है क्योंकि खासी स्लो है। यहाँ बहुत जोरदार हिट मारते हैं, टाइम उतना अच्छा नहीं करते हैं, लेकिन जितनी फोर्स है, जितनी पावर है इनके अंदर, बॉल को जबरदस्ती बाउंड्री तक पहुंचा देते हैं। क्या यहाँ पे एक हीरो वाली इनिंग खेल सकेंगे? क्या ये हीरो बन सकेंगे केपी के लिए? बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। अच्छी वापसी की आमिर यामीन। आज अच्छे यॉर्कर्स देखने को मिल रहे हैं। रावलपिंडी में हमने चंद यॉर्कर्स देखे थे, सलमान इरशाद कोशिश करते हुए नजर आए थे। कल यहाँ पर सिंध के खिलाफ ऐसी बड़ी उम्दा बॉलिंग की जमान खान ने डेथ ओवर्स में। मुल्तान में ये यॉर्कर्स हमें ज़्यादा देखने को मिलेंगे क्योंकि रिवर्स स्विंग का एलिमेंट होता है कहीं ना कहीं। यहाँ काफ़ी ड्राई पिचेस हैं, अगर आप देखें स्क्वायर पे, तो जब जब बॉल उन पे लगेगा तो डेफिनेटली रफ होता चला जाएगा, और जितना रफ होगा उतना ही रिवर्स स्विंग के लिए करामत होगा। देखिए काफ़ी यहाँ पे पिचेस जो हैं एक्स्ट्रा ड्राई हैं, ये आपको नज़र आ सकते हैं, और जब जब बॉल यहाँ पे लगेगा बॉल रफ होता चला जाएगा। एक और चौका हो लगाने की कोशिश ज़रूर की थी, लेकिन इस तवक्को से उनकी ज़्यादा स्क्वायर चली गई। जी हाँ, जैसी आवाज़ आई थी ऐसा लगा था जैसे ये बॉल बहुत ज़ोरदार और तेज़ी से बाउंड्री की तरफ जा रहा है। एक बार तो मैं भी धोखा खा गया था कि शायद ये फ्लैट बॉल 4 रन होंगे। 82 रन। देखिए जोरदार शॉट। खालिद उस्मान बैटिंग कर लेते हैं, यहाँ पे उनका जो रोल है वो साथ निभाना होगा सर्वर का, क्योंकि सर्वर ऐसे बैटर हैं जो बड़ी हिट मारते हैं, छक्के मारते हैं। 82 रन 31 बॉलें। परेशानी की बात हो सकती है सेंट्रल के लिए, या सेफ है? होनी नहीं चाहिए यहाँ से। यहाँ क्योंकि ये बार बार हिट्स लगाना पड़ेंगी दोनों खिलाड़ियों को, और ऐसे में क्योंकि बाउंड्री का फासला ज़्यादा है तो मौके होंगे बॉलर्स के लिए। एक आध गलती बैट्समैन कर जाता है, और इस बार बिल्कुल नहीं।
फिर से यॉर्कर करने के लिए गए और ये फुल टॉस बनाकर खेले, एक और चौका लगा दिया। इस ओवर की दूसरी बाउंड्री पाई सरवर आफरीदी ने 116 पे 5। जहाँ जल्दी पोजीशन में आ गए थे, अपने आप को तैयार किया इस शॉट के लिए, और फिर एक बार टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी लेकिन जोर इतना ज्यादा था बॉल पे कि वो बाउंड्री लाइन के पार चली गई। कीपी को कहीं ना कहीं से एक 20 रन का ओवर ढूंढना है। अगर इस 78 रन की उम्मीद करनी है तो अगर वहां से एक 20 रन का ओवर यहाँ हासिल कर लेते हैं तो जो मोमेंटम है वो हासिल कर लेंगे। और मोहम्मद सरवर जैसे प्लेयर हैं, उनमें एहलियत मौजूद है कि ऐसा ओवर एक तलाश करें, लेकिन कौन सा बॉलर। सेंट्रल पंजाब की फील्डिंग का म्यार खासा पासा, शुरू में नई गेंद पर कैचेस गिरे, उसके बाद उसामा आए और मिस फील्डिंग हुई उनकी बॉलिंग पर। यह भी मौका था शोएब मलिक, उनके लिए गुगली हो गई, गेंद पड़ने के बाद टर्न हो गई थी। बैटिंग हीरो मोहम्मद फैजान अच्छी बॉलिंग की है, 2 ओवर्स में सिर्फ 12 रन दिए, 1 विकेट हासिल किए। और ऐसे कॉन्टेक्स्ट में बड़ी टीम के अगेंस्ट अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस दे सकते हैं तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद है। बैट से भी रन्स किए, बॉलिंग भी शानदार कर रहे हैं, तो प्लेयर ऑफ द मैच के कैंडिडेट हो सकते हैं। एक कटर इनको इनटू द पिच गिराया। कुछ अर्सा पहले जब ये पीएसएल में आ रहे थे, ये गेंद लगी है सीधी जाकर रान पर कप्तान के, या क्योंकि बल्ले से टकरा कर लगी थी तो बड़ा तकलीफ दे होता है। इनसाइड एजेस पर जब भी गेंद आती हैं ऑफ द एज तो ज़्यादा जोर से लगती है। यहाँ हम उम्मीद करेंगे कि वो खैरियत से हैं, क्योंकि ऐसी बॉल बहुत दर्द दे सकती है आपको। और खालिद उस्मान एक अहम हिस्सा है इस केपी की साइड का। आसिफ आफरीदी, रिजवान उनकी गैर मौजूदगी में कप्तानी करते हैं T20 की। जो बैटिंग कोच थे ये भी ज़्यादा खुश होंगे नहीं। अच्छी इनिंग रही साहबजादा फरहान की जानिब से, लेकिन जो स्ट्रगलिंग इनिंग रही वो मोहम्मद हारिस की थी, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल दिया। जो शुरू में उन्होंने ओवर ज़ाया किए, सर्कल के 15 बॉलें ली, सिर्फ 14 रन किए। जब एक बैटर के 2 कैचेस ड्रॉप हो जाएं तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो लंबी इनिंग खेलेगा, बड़ी इनिंग खेलेगा, लेकिन वो ना हो सका। इसरारुल्लाह का एक्सपेरिमेंट भी नाकाम रहा इस मैच में। कामरान गुलाम 5 रन बना सके, आदिल अमीन ने 14 रन बनाए। यार अगर नंबर 2 और नंबर 3 बैट्समैन आपके 25 गेंदों में 26 रन बनाएंगे तो फिर मुश्किल नहीं रहेगी टीम। आप पहले बैटिंग कर रहे हूँ या बाद में। आमिर यामीन ने 1 विकेट ली, अली असफन ने अच्छा स्पेल किया, उन्होंने 2 खिलाड़ियों को आउट किया, उसामा मीर और फैज़ान, उन्होंने भी एक खिलाड़ी को आउट किया है। फैज़ान के लिए ये बहुत ही अच्छा मैच गुजरा है। अभी ये 2 बरस पहले ये PSL में नज़र आए थे मोहम्मद फैज़ान, और इनके बारे में कहा गया था कि अब्दुल रज़ाक जैसा ऑलराउंडर बनना चाहते हैं। आज उनकी कोचिंग में खेल रहे हैं, अच्छी बैटिंग की है, अच्छे यॉर्कर कर रहे हैं, सेंट्रल पंजाब के लिए कारआमद साबित हुए हैं फैज़ान। जी हाँ, बहुत खुशाइन चेंज साबित हुए हैं ये। टूर्नामेंट के आगाज़ में ही टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जब वहाब रियाज टीम से ड्रॉप हुए, अहमद शहजाद ड्रॉप हुए, तो किसी ना किसी को स्टैंड अप करना था, और इन्होंने ना सिर्फ बॉलिंग में और बैटिंग दोनों शोबों में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई है। और जब ऐसी बड़ी टीमें स्ट्रगल कर रही हों तो एक ऐसा प्लेयर वो स्पार्क ले आता है टीम में, और ऐसा ही फैज़ान ने किया है। और हम देख सकते हैं कि पूरी टीम की बॉडी लैंग्वेज ही आज अलग है। ऑल्दो अब्दुल्ला शफीक को ड्रॉप करना एक बहुत बड़ा डिसीजन था, लेकिन बोल्डनेस दिखाई रज़ाक भाई ने, उनको ड्रॉप किया। उठाकर खेला और गेंद हर हद पार कर गई। मिड विकेट पर मुश्ताक मोहम्मद इनक्लोजर के सामने, और
ये बहुत बड़ी बाउंड्री है, लेकिन ये ऐसा शॉट था जो शायद दुनिया की हर बाउंड्री को ही पार उतरता। जी हाँ, एरिया जो लेंथ का एरिया है वो देखना होगा। यहाँ पे मुंह में बॉल जब करेंगे और जितने ज़ोरदार और पावरफुल इंसान है सर्वर, ये बॉल हमेशा ही बाउंड्री लाइन के बाहर जाएगा। अभी भी उम्मीद रखे हुए हैं और जब तक सर्वर रहेंगे उम्मीद रहेगी। ये अच्छी बॉलिंग है। ऐसे बॉल ज्यादा करने होंगे क्योंकि लेंथ बॉल आप करेंगे तो ज्यादातर रन्स मिलेंगे। यॉर्कर लेंथ या बैक ऑफ दी लेंथ डिलीवरीज ही कारआमद होंगी इस पिच पे, क्योंकि बॉलर्स के लिए यहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं इस पिच पे। हमने देखा है दोनों दिन, आज तीसरा मैच है, रन्स बहुत आसानी से मिलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा ने आज इतनी अच्छी बॉलिंग की भी नहीं। शुरू में नई गेंद पर भी वो ऐसी बॉलिंग नहीं कर सके जो उनकी शोहरत रही है, और किसी हद तक सहल पसंदी का भी शिकार हुई है ये टीम। मुसलसल 6 मैचेस जिस तरह से इनको कामयाबियां मिल रही थी, 127 पे 5। Equation getting tighter for Khyber Pakhtunkhwa. 67 required of 24 deliveries. And they're going to heavily bank on Sarwar's batting if he can pull this one out. Khalid Usman, the captain, is in the middle. Central Punjab has done decent work to keep them under check. Good bowling, but good running as well. They need a miracle. Khyber Pakhtunkhwa let it slip too far from their grasp. Required run rate of almost 18 runs and over. T20 cricket, every now and then we see these kind of totals getting chased, but it needs something spectacular. 3 fielders on the onside, on the deep. Mid-wicket is his area. Mid-on is up in the ring. Mid-off is up in the ring as well. Boundary available if he cleared those 2 fielders. Third man is up as well. Well, as I spoke, mid-on and mid-off both have gone back. Cover fielders in, so boundary available on the offside if he gets through the infield. Slow one, catches the call, and it's taken. Easily done. It's falling apart. The big man goes. Sarwar. Hit it straight down the throat of that fielder at mid-wicket. He didn't have to move an inch. He set it up for that shot. That was his area. But the lack of pace really did for him. And Central Punjab, for once, are really dominating now. And all-conquering Khyber Pakhtunkhwa reeling 128 for 6. Server goes for 28. Hunain Shah has been impressive with his bowling. Really good run up, decent pace. And he's done well to execute the perfect bowling. I have to give credit to Qasim as well. Larger boundaries on the square. He managed to hit those hard lengths. It's never easy with the sort of pace he has to clear straight down. Maz now walks in, joining the captain in the middle.
Can he pull out something with the bat? He did it with the ball, but it's a whole different ball game now. Apesh, and that'll be another one. 2 for Hunain Shah. 2 and 2, a clever change of pace. Mars was waiting on that back foot, waiting for a quick delivery, but that was a slow delivery, and now this young man is on a hat-trick. His first 2 wickets in T20 cricket. Look at that, the execution of the slow delivery. The length was good. Mars went through with a shot too early, and Hunain will be on a hat-trick. Without troubling the scorer, Mars goes for a duck, 128 for 7. Challenge for the first time, Khyber Pakhtunkhwa in this tournament. They had the winning streak, but there had to be a day for them to get that first defeat. Who would have thought it would be Central Punjab? Today, they ticked all the boxes for them. And how about this? On hat-trick, Hunain Shah. It's been brilliant. Central Punjab will be delighted because they desperately needed a change in fortune. And despite a bad start, they've really executed their plans well. This will give them a lot of confidence. Hat-trick ball. Here we go. Oh, good delivery. Good pace, targeting the stumps. They're pushing hard for the second one. They'll have to hurry. Oh, a direct hit might have kept things a little bit interesting. It would have been a team hat-trick because I think he was out. But this is the last wicket. The slow delivery, the change of pace was too much for Mars. Clearly deceived by that. Look at the lengths though. Just bowling it far enough, wide enough from the batter. He couldn't get a solid enough contact. When you're clicking 140 plus, it always keeps the batters guessing at what pace you're going to come at them. And he has executed those slower deliveries with perfection. Not just the pace, it's a full-on package as a fast bowler. When he bowled the first 2 overs, he was really under pressure because the chase was on at that stage. Slightly wider there, the batter barely reached at it. Another slow delivery. Yeah, the first 2 overs were really impressive because the top order was batting. KP hadn't lost a wicket. They were in the game, but the youngster ran in hard and he bowled those hard lengths that Marina was talking about. Didn't give anything away, and that average, the required run rate, propped up very quickly from 9 to 12 when he bowled those 2 overs in tandem with Osama. And since then, Central Punjab never let that grip loosen. And now they're really tightening the screws. Oh, that sounded well. Has he found the gap yet? It has. Lucky boundary. And that went all the way. Cries of catch it. Irfan Niazi was lurking on that deep mid-wicket area, but good enough contact there. Another slow delivery, this time slightly short. Alat Khalid Usman, a little bit more time. He picked his area. Wasn't too far away from the fielder. Just enough to earn him a maximum, but still. Great over from the youngster. 2 wickets in it. He ends his spell with 2 for 28. Sensational debut for this young man. 136 for 7. Samami to continue. But 1 wicket, giving away 21 runs. Central Punjab will be delighted with this win against KP.
And just logged it. Won't be travelling to the fielder. They did well overall in all three departments. They batted well, came out with a clear intention. They capitalized the start they had, and bowling has been superb today. Straight to the fielder. Should have been a boundary. That's the sigh you heard from Khalid Usman. Osama has bowled well in this championship without getting much wickets. This could be a time where he can afford to try and buy some wickets because his team is in control. Oh, that was a great delivery. This time the genuine leg spinner is testing Khalid Usman. He's going to go after everything now. Pakistan did have a deficiency in the spin department. This tournament has given them more options. The resurgence of Osama Mir. Young Faisal Akram has bowled well. It's really something that selectors will be looking at because Osama was thought about quite highly a few years ago. Seemed to have lost his way. That's gone aerial, and that got some miles on it. Another maximum. This time it's coming off the bat of Imran Jr. It wasn't a half volley. Give enough time for Imran. Just plunked that front foot and went for it. Bang. These tailenders, they want to have some fun. They're not going to hang around for long. Pushing hard for the second one. And they're trying to make a comeback. Oh, seems like a decent delivery. And good running, but throw. We'll have to check that. The umpires have decided to go up. After a bit of reluctance, Rashid Riaz decided to call in the third umpire to help him out here. Qasim Akram was the fielder. The reaction from the central Punjab fielders would suggest that they think the batter was in. But these things can be quite close. Yeah, the amount of time he took to dislodge the bails allowed the bat to slide in. Good technique from Khalid Usman. You have to see, he was dragging the bat from quite far behind and gathered pace as he came closer and saved him on that occasion. Survived that, Khalid Usman. Direct hit would have been caused trouble for Khyber Pakhtunkhwa. Still waiting for the official decision. Seems like it's safe, no worries. Two words there, not out. 18 gone, Khyber Pakhtunkhwa 146 for 7. Bowling change, left arm over. If I have to ask you to reflect on the batting of Khyber Pakhtunkhwa, where would you think they fell short? Straight down the ground. Long off is pretty straight. Qasim Akram placed himself just a single. It looked like KP was caught cold today. Can't really pinpoint what happened really because they played the regular lineup, just the one change. But the power play wasn't as good as they normally have. And I could only term it as if just they weren't fully focused today. The margins are small here. Because they had all the resources when you talk about their batting lineup. It was just the start and maybe the target. Bowled him! Totally castled Imran Jr. Waqas Maqsood has been decent. Another one falls for KP. Waqas Maqsood is another reason why Central Punjab is in such a dominant position. He's a good exponent with the new ball and even better with the old ball with all the variation. This time he hits the bullseye.
full and straight. The middle stump right out of the ground. Imran gone for 9, 147 for 8. It seems like Central Punjab has a habit of punching down KP. Back in 2021, KP was bowled out by Central Punjab on 128 in 18.2 overs. They do have a history though. Yeah, they're all conquering the Khyber Pakhtunkhwa side. But if any team can get better of them, that's Central Punjab. Really delighted for Abdul Razak though, the coach. He's been through pretty difficult times. He's chopped and changed his sides, looking for the right combination. Is it too little, too late? Only time will tell. Rashid Iqbal is very disciplined with the bowling. Another good yorker from Vikas. That's superb bowling, death bowling as you would love to see. He's always on the money. Have a look at that, just tipping in, tailing in, and a wild swing. Never got the connection. Imran Jr. His fun was cut short by this near-perfect yorker. Like I said, the lower order batters, you know the situation's out of hand. He just wanted to have some fun. Vikas was too good. Oh, good attempt there, but really couldn't just grab onto the ball. Runs are coming, a smile on the captain's face. Central Punjab will obviously gain immense boost from this win. Into the pitch, slow delivery. Vikas is very good at that. Almost deceived Khalid Usman, just slightly away from that fielder at 45. Still, the deception was there. Vikas is wily exponent. He will add some experience to that Central Punjab bowling lineup. Ask the deep fine leg square to go a bit more squarer. Good yorkers. That's what you want to see from your pacers in the end overs. The other thing is Vikas knows about his game. He's very experienced. You see that fielder that he moved before the last ball? Because that short delivery before that was called 1 for the over. So he knew he couldn't bowl into the pitch, so he adjusted his field accordingly. And now he's got a chance against the tail-ender, Rashid Iqbal. Good change of pace yet again. He's beaten that out edge. 19 gone, KP 153 for 8. That's the next game lined up. Balochistan locking horns with the home soil favourites ATF Southern Punjab. Will join. The action starts at 1:40. It's match 20 from Multan Stadium for Kingdom Valley National T20 Cup. Well, Khalid Usman is still in the middle, but 41 of 6. It's beyond anybody's. He's launched it and will find the gap. Amir Amin has been welcomed with a boundary. Amir Amin generally struggles at the back end of the innings, so this is a good opportunity because the pressure is off into the pitch, but too short and too wide, just allowed too much time. Now look at that stance. He's waiting for anything ever so slightly on a shorter side. Open stance, deep into the crease, looking to whack it into the leg side.
will be a huge relief for this guy, the captain. And again, this time straight, the fielder's coming underneath, and he'll finish the job. One too many shots for Khalid Usman. Well, the result is already a foregone conclusion. But Hunain, who missed 2 chances earlier, will be relieved because he caught his first catch at this level. Khalid Usman tried till the bitter end, but like I said, the result was a foregone conclusion quite a while ago. The skipper will have to walk back, and Central Punjab getting even closer to that victory. Gone for 24, KP 157 for 9. Last man walks out in the middle. Imran Khan Senior. The perennial number 11, Imran Khan Senior. If you make a team of number 11s, Imran Khan will be still number 11. Change of pace, wild swing. And that's the reason why. Quite evident. Again, just looking to hit. He had to go, but just ended up not finding the distance. And Shah, he'll be delighted the way he announced his presence in Kingdom Valley National T20. Many eyes will be following him for sure. Swung with all his might and force. And barely trickled out of the 30-yard ring. That is Imran Khan Senior's batting prowess. And he's enjoying it, which is good to see. Got a smile on his face. He should be smiling. It's hard to make him smile though. But he's a happy guy today. Brilliant comeback. It's not all lost. If they can manage to win games moving forward, all the games, they might have a chance to qualify. Slight change in the field. Amir Yamin has brought long off in the circle now. Into the pitch. And it's going to sail away over the boundary. Arshad Iqbal getting in on the act. He scored a first-class half-century last year, batting as a night watchman. But this one, Amir Yamin is really vulnerable at the death. That is quite evident, even against this lower order batters. He scored 40. He's given away 14 runs already in this over. Still 1 to go. With this sort of pace, it's not a wise thing to bowl a shorter delivery. Full toss. That will race away to the boundary. And with that, Central Punjab has managed to register a huge win against KP. They'll be delighted. There's the Central Punjab camp, delighted with their victory. Qasim Akram, the young skipper, is their second victory of the season. And technically, they're still alive in the championship because the table is so congested that Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan have been able to create a gap between themselves and the other 4. But the rest of the 4, everything can happen. As the result, Central Punjab winning by a good margin of 25. They were always in control. The contest for this run chase was over well before over number 15. They approached this game with a very clear mind, good intention. Execution was spot on when we talk about batting as well as the bowling. Khyber Pakhtunkhwa were pushed back into the corner. They got tested in all 3 departments today. It wasn't a flawless performance from them, but a huge boost for Central Punjab. And they managed to pull a win against the table toppers. And that's how things
went for Khyber Pakhtunkhwa, 47 for Saibzada Farhan. Haris had a shaky 14. Nothing much to talk about the middle order, that's where they have struggled. Mohammad Sarwar with 28, fighting the way back. Khalid Usman with 24. And they just managed to put 168 on board. Inclusion of Waqas Maqsood really boosted the bowling lineup of Central Punjab. An excellent spell, 1 for 25, both with the new ball and at the back end. Youngster Hunain Shah was hugely impressive. He will make the headlines. Finished with 2 for 28. Wickets also for Ali Asfand at crucial time. Central Punjab's bowling lineup finally looking a bit settled, and they still have time to make a good comeback. They restricted KP to 168 for 9. The giants of this tournament managed to get... They actually were put down by Central Punjab, a very fragile Central Punjab. That's the confirmation. Some good innings from Tayyib and Muhammad scored 70 odd runs. Maz managed to bag 4 wickets and 3 for him. Saibzada fighting 47, but they fell very short. 25 runs were the difference between these two teams. KP for once was caught cold. Not their best day, but still they're top of the table. Balochistan hot on their heels now with just 2 points separating the bottom 4, and it's wide open for everyone. And even if you look at the run rates at the in the rightmost column, there's not much difference between their net run rates as well. This win has really opened up the points table here for all the bottom 4 teams. I think Khyber Pakhtunkhwa and Balochistan can think they're pretty safe at the top 2 positions. It was going to be a challenging task. Khyber Pakhtunkhwa opener started off. Haris couldn't really get going. But Saibzada Farhan, he looked in a superb form. Timing the ball really well. This was the first chance put down by Hunain Shah. And this was the second one. A hard attempt. You need wickets. You sloppy fielding starts by Central, and this was the first one. Second one, good glove work from Mohammad Akhlaq today. Saibzada throwing his wicket just 3 shy of his 50. This one a straightforward catch. Afterward, Central Punjab managed to tighten things up. Amir with a half attempt there. Another good take at the boundary. Tayyib Tahir with a safe pair of hands. Never get going afterwards. Khyber Pakhtunkhwa. Sarwar tried his best. A few lusty blows, but in the end the task got bigger and bigger, and the wickets kept tumbling. Central Punjab did the right things for most part of that innings, and that was the result. The pressure was felt by Khyber Pakhtunkhwa throughout. Good death bowling by Waqas Maqsood. Finish off the tail. Amir Yamin got the wicket of skipper Khalid Usman. Although he went for 15 in his last over, but by that time the game was pretty much in the bag for Central Punjab. They celebrated the second win. We'll take a break and we'll join you with Sikandar Bakh for post-match presentation.
Hello and welcome to the post-match presentation of match 19. What a game we've had. Great comeback from Central Punjab and winning against the top side KP in the tournament. The margin of victory for Central Punjab was 25 runs. That's a big margin in T20 cricket. I welcome our guest today, Mr. Mohammad Noman Ashraf. He's Sales Executive, Kingdom Valley. Thank you for joining us. And straight away we get to the Kingdom Valley Player of the Match, cash award of 25,000 and a trophy for the man who batted so well today, Mohammad Faizan. 72 of just 36 balls, 7 sixes, 4 fours and a wicket. He'll receive his cash award of 25,000 and also the Kingdom Valley Player of the Match trophy from Mr. Mohammad Noman Ashraf. Superb knock from Mohammad Faizan. We'll have a quick word with him also and we'll find out about his innings and about his performance today. Aaiye Faizan. फैज़ान शानदार परफॉर्मेंस रही अप इन दी ऑर्डर आपको चांस मिला थोड़े बहुत चॉप एंड चेंज की कप्तान ने बताइए किस टारगेट के साथ गए थे माइंड में कोई स्कोर रख कर गए थे टोटल कि ये बनाना है आज हमने पहले बैटिंग आई है या देख रहे थे किस तरह से जाता है पावर प्ले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करूँगा और जहन में यही था कि इधर 190 180 ईजीली हो रहा था तो यही जहन में था बुरे बॉल को मारेंगे और अच्छे बॉल को सिंगल करने की कोशिश करेंगे और विकेट इतना ईजी नहीं था आज थोड़ा विकेट टफ था तो अल्लाह ताला ने परफॉर्म करवाया आपने कहा विकेट इधर लेकिन मिड विकेट तो आपका पक्का है बिल्कुल 7 छक्के आपने लगा दिए आज वहाँ पर वो बस मुंह में बॉल मिले और इसलिए लग गए बॉलिंग में भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है एक जिम्मेदारी बढ़ जाती है जब एक बैट्समैन बॉलिंग भी कर रहा होता है तो इस नई रिस्पॉन्सिबिलिटी को अप इन दी ऑर्डर बैटिंग और फिर बॉलिंग किस तरह एंजॉय कर रहे हैं जी इंशाल्लाह अपनी पूरी कोशिश करूंगा अपनी टीम के लिए जितना अच्छा कर सकूं उतना अच्छा करूं चलिए बहुत बहुत मुबारक और लास्ट में मैं ये मैन ऑफ द मैच अपनी अम्मी और अब्बू को डेडिकेट करूंगा क्योंकि उनकी बहुत दुआएं मेरे लिए थैंक यू बहुत शुक्रिया मोहम्मद फैज़ान खालिद उस्मान से बात करेंगे जो कि कैप्टन हैं केपी के खालिद आज कुछ थोड़ा सा अंडर प्रिपेयर्ड लगी टीम पहला मैच था मुल्तान में लेकिन कुछ रन्स ज़्यादा दे दिए ऐसा एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप लोगों की बॉलिंग ओवरऑल टूर्नामेंट में काफ़ी टाइट रही है जी बिल्कुल हमारा जो डिफरेंस है लास्ट मैचेस में आप देख ले तो हमारा फील्डिंग का डिफरेंस आ रहा था बाकी टीमों से तो आज हमने क्रूशल टाइम पे 2 कैचेस गिरा दिए जिसकी वजह से हमने रन ज़्यादा करा दिए बॉलिंग ओवरऑल बहुत अच्छी हुई है मेरे हिसाब से थोड़ा बैटिंग में भी अगर आप जाएं पावर प्ले में आप 6 रन पीछे थे सिर्फ उनसे लेकिन फिर आगे जाके कहीं एक्सेलरेट कर नहीं पा रही थी टीम जी बिल्कुल हमने पावर प्ले भी उस तरह यूज़ नहीं किया आप अगर 200 रन चेस कर रहे हो तो पावर प्ले में आपको चांस लेना पड़ता है और बीच में आपको चांस लेना पड़ता है जो नहीं हुआ और एंड हमारा आप देख ले तो 26 रन से आ रहे हैं तो इंशाल्लाह इस पर वर्क करेंगे और आगे मैचेस में हम कोशिश करेंगे कि ये गलतियाँ ना हो हमसे चलिए सही टाइम पे थोड़ा सा झटका मिल गया है ताकि जी बिल्कुल सही है चले खालिद थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस और अब इनवाइट करूंगा कासिम अकरम को कैप्टन ऑफ सेंट्रल पंजाब कासिम ऐसी परफॉर्मेंस की शायद तलाश थी आपको आपकी टीम को जिससे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े हो सकते हैं यही अपराइजिंग हो यहाँ से टीम की जी बिल्कुल सबसे पहले तो अल्लाह ताला का शुक्र है कि एक अच्छी जीत मिली है और इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू रखेंगे हमारे टॉप ऑर्डर बड़ा अच्छा खेले जैसे फिजान माशाल्लाह बहुत अच्छा खेला तैयब भाई बड़ा अच्छा खेले तो बड़ा अच्छा कमबैक हुआ हमारा आज के चेंजेस और बैटिंग ऑर्डर में थोड़ी आपने आगे पीछे तब्दीली की उससे काफ़ी आपको शायद एडवांटेज मिला खासतौर पे पावर प्ले आपका अच्छा गया जी बिल्कुल फिजान को यही प्लान दिया था कि ऊपर जाना है हिटिंग करनी है तो उसने माशाल्लाह बड़ी अच्छी हिटिंग की और बड़ा अच्छा रहा उसका ओवरऑल इस मैच में किस पर्टिकुलर चीज़ को सेहरा देंगे विक्ट्री का बॉलिंग डिपार्टमेंट को या कहेंगे कि बैटिंग ने इतने रन किए क्योंकि यहाँ तो रन बन रहे हैं इस पिच पे जी मैं बॉलिंग को क्रेडिट देता हूँ कि बड़ी अच्छी बॉलिंग सब बॉलर ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की बैटिंग भी अच्छी रही हमारी बॉलिंग भी अच्छी रही तो ज़बरदस्त रहा ओवरऑल बहुत शानदार परफॉर्मेंस सेंट्रल पंजाब की मुबारक हो आपको थैंक यू 2 पॉइंट्स और हासिल कर लिए सेंट्रल पंजाब ने दे मूव अप टू 4 and that is all from the presentation. We also take a break and we'll join you with more action with the second match coming up that is between Balochistan and ATF Southern Punjab. Don't go away. It's in there. Should be taken. शानदार शॉट स्मैश कर दिया बड़े दिलकश तरीके से खेला Played on to the stumps. Down again and maximum again. What a 50 that is. ये बहुत ही अच्छा शॉट खेलते हुए नजर आए यहाँ कासिम अकरम को जाना होगा Now that is an excellent shot. Gone for 4. Nowhere near. Long way down.